सब अच्छी तरह आती रहती है ये सब मैं तो ये तक कैंसिल कर रहे हैं अरे मैं 2022 और 2020 में आ गए अभी हाँ वे जेबी में अरे वो सबसे बेहतर वो मस्त अभी भी अच्छा नए कारगर मैं पहले सबसे पहले फर्स्ट गेम में it's natural disaster से अगर 19 फॉलो अभी दो बार मैं ज्वाइन किया एक बार में 26 बिल स्टार वो ब्लॉक रहता है ना उसके अंदर एंटर करता है फिर वो डेलीगेट करता है उसमें गया वो तो मैं उसको ज्वाइन किया कि उसका एक्सपीरियंस है 26 का तो मैं गया वो बार क्या है when himself come now anyone is online no one हाँ both of you don't sit together आशा एक में आ गए हाँ और बेटा आप अकेले हो आप भी आगे यहाँ होके बैठो आराम से sit आ रहे हैं हाँ let them come ना but I don't think all will come today today we have to complete two compounds HCl and ammonia अच्छा बेटा आगे आ जा पहले क्यों नहीं लाए वॉल्यूम आई थिंक लास्ट टाइम आई हैव टोल्ड यू टू ब्रिंग वॉल्यूम दो दोनों 1 2 दोनों साथ में वॉल्यूम 2 तो अपना नोटबुक खोलो ओपन योर वॉल्यूम कीप योर पेंसिल पेन सब साथ में रखो नोटबुक पे ओपन करो इन नोटबुक राइट डाउन टुडेस डेट एंड हेडिंग स्टिल नो वन इज ऑनलाइन वेरी गुड ऑल आर एंजॉयिंग फ्राइडे राइट हाँ एक्चुअली सिंस फ्रॉम यस्टरडे इट इज गोइंग वेरी हेवी फिर से छुट्टी मिलेगा नेक्स्ट संडे actually at many places they are asking for holiday on Monday पता है फिर वापस से वो होगा ट्यूशन नहीं बेटा कैसे हो रहे हमारे पर अपने टीचर्स जो है स्कूल यूनिवर्सिटीज को नहीं छुट्टी मिला फॉर एग्जांपल आई एम वर्किंग इफ आई एम नॉट गेटिंग हॉलिडे so it is not possible for in morning session मिलेगा तो ठीक ही है आई विल बी हैप्पी फॉर दैट चलो बट वो लोग एंड मूवमेंट पे मतलब 11th आवर पे our schedule is not changed only it happens when any problem is there with teacher otherwise not chalo let's start under this we have to studies of compound we have to study 4 compounds and for today 2 compounds are allowed first one is hydrogen chloride and second one is ammonia okay now we all are very familiar with hydrogen chloride right now and we know the formula also बहुत सारे reactions में हमने hydrogen chloride देखा है so formula of hydrogen chloride is HCl so molecular formula side by side note it down हाँ मुझे पता है आपको आता है लेकिन फिर भी formula is HCl then after formula this is molecular formula after formula next comes is a molecular mass. So what is molecular mass? Without looking, please tell me because you have done it from I think 8 or 9 standard. Molecular mass. You know now how to calculate molecular mass? So what is molecular mass of hydrogen? 1 plus 35.5. So your molecular mass of hydrogen chloride, it comes out 36.5. Right?
Then the next thing, it is given type of bond. So in this compound, I think in your syllabus, 3 types of bonds are there: covalent, ionic, and coordinate bond. We are not focusing much on the coordinate bond, but the two are very important: covalent and ionic. Now this contain which bond? Hydrogen chloride covalent bond. So bond which is present in this compound, it is covalent bond. And how covalent bond is formed? By sharing of electron. By sharing of electron. Okay. Now when we say by sharing of electrons, so sharing is between hydrogen and chlorine. Right? The hydrogen and chlorine. So we need to have its atomic number with how the electrons are shared right now. So what is atomic number of hydrogen? 1 H. Electronic configuration, you can write it as 1s1. ऐसे लिखते हो या खाली आप 1 2 लिखते हो? Only 1 2 ना? Then for chlorine, 17 Cl, and here we can write, बोलो बताओ जरा, 2 8 and 7. Now from this picture it is clear, hydrogen, it has deficient of only 1 electron right now, and for complete its duplet state, similarly chlorine is having deficient of 1 electron to complete its octet. So by mutual understanding, there will be formation of covalent bond. Okay. Now covalent bond for this one, hydrogen with its 1 electron, 1 hydrogen atom, plus chlorine, मैं outer shell ही बनाती हूँ with 7 electrons. This is Cl, 1 2 3 4 5 6 and 7. हमारे बुक में थोड़ा सा पिक्चर अलग दिया है, थोड़ा सा little bit difference. Instead of making the last one, last orbit, valence orbit or valence shell, all 3 are made. So 2 8 and 7. Okay, तो आपके जैसे बुक में दिया है, टेक्स्ट बुक में, follow that pattern. Just check whether it is in this way or like your volume. You have textbook with you, no? Quickly check करो. Again I am repeating, strictly follow your textbook. जो भी कोई आप refer कर रहे हो, सेलिना और कौन सा है बेटा? One is सेलिना, another is, दो ही है ना, दो है. मतलब normally 2 students are following. One is सेलिना और एक है दलाल. नहीं उनका दोनों भी है. few students having Selena, few are Selena. अच्छा, it is in this form or like our volume वाले फॉर्म में है? नहीं मतलब ऐसा वाला है, only the outer shell है या all 3 shells? एक ना outer shell. Okay, so आपके हिसाब से आपको जो ठीक लगे करो. If you want, you can make that all 3 shell, 2 8 and the last one contain 7 electron. Okay, now this is for chlorine, this is for hydrogen. This will combine together. So small atom of hydrogen and little bit big size chlorine. These electrons are shared. Now one more thing you can do, instead of making dots, you can have cross and dot also. Both are correct. Huh? Cl and this is H. 1 2 3. You can submit. Or other classes are going on. So therefore 2 4 6 8. Correct. For this chlorine, counting कर रहे हैं हम लोग. If you keep your hand here, for hydrogen, only consider the circle of hydrogen. 2 electrons are there. Here 1 electron deficient, it is having 1 electron, so duplet is completed by sharing. Similarly for chlorine, Cl, total number of electrons are 8. Okay, अगर आपको थोड़ा अलग दिखाना है, to make it little bit different, instead of taking cross, you can go for dot and cross. Then you have to write cross means electron from carbon, dot chlorine, dot means electron from hydrogen, और यहाँ पे overlapping region भी वैसे ही पर. It is up to you. So quickly take down this, फटाफट बना लो. जल्दी लिखते नोट डाउन. किया है तो अच्छा है, नहीं किया तो फिगर ट्राई करो एक बार. जल्दी करो, कॉपी मत करना, you try by your own.
श्योर नो बट यहाँ पे तो मुझे कोई ऑनलाइन दिखाई नहीं दे रहा है नॉर्मली आरो वो तो ऑनलाइन है शंकर है और इतने सारे एब्सेंटली है लेट होता है सो ये ध्यान रखें ओके हमको फिनिश करना है ये टॉपिक 2 topics we have to finish today अच्छा बनाना ओके राइट डाउन एवरीथिंग एंड डोंट कॉपी फ्रॉम दिस वॉल्यूम से भी कॉपी मत करो बोर्ड से भी कॉपी मत करो ट्राई बाय योर ओन at the end beta make difference keep difference in both the circles your both circles are they are same size I think right now और यहाँ से तो दे आर सिमिलर ऑलमोस्ट सिमिलर हाइड्रोजन का छोटा बनाना एंड फॉर क्लोरीन मेक इट लिटिल बिट बिग साइज का देखो यहाँ पे मैंने किया है So let's go for the next part. In middle sharing overlapping region show 2 electrons. Okay. तो इतना तो सबको पता है it is clear. Now next thing it is occurrence. So where does this hydrochloric occur? Whether it is present in our body? Where? Stomach. So it helps for gastric juice. It helps for the process of digestion. And in nature वोल्केनिक गैस में जो वोल्केनिक इरप्शन में जो गैस निकलता है it again contain hydrochloric acid so these two are the normal occurrence of hydrochloric acid apart from this we can prepare in lab on industrial basis we can prepare hydrochloric acid or hydrogen chloride now one by one the next thing which is given it is preparation of hydrogen chloride gas okay difference देखते जाना hydrogen chloride gas normally how we are saying hydrochloric acid ऐसे ही बोलते हैं ना हम लोग यहाँ पे क्या है ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस so this is one of the hint how the question is coming if it is for preparation of hydrogen chloride gas आपको preparation gas का ही लिखना है if they are asking for hydrochloric acid preparation then you have to go for the acid preparation understood na gas and acid both are one and the same but one will be in the gaseous form other will be in the liquid याद रहेगा ना okay now in our book the first one is given general preparation by synthesis direct combination so I don't think direct combination it is so difficult okay what we have to do in direct हमको कुछ भी नहीं करना है direct combination में it is direct combination only so hydrogen gas it combines with Cl2 molecule forming 2 HCl वेरी सिंपल कुछ भी करना नहीं है हमको वहां पे ओनली विद हाइड्रोजन गैस जी मैंने लिखा है Cl2 gas these two will directly combine to form HCl gas now this process it is happening in presence of sun diffuse sun इतना याद रखना है सिर्फ apart from that there is nothing difficult to remember okay so quickly write down this reaction on arrow write down diffuse gas now one more thing it is given in your book hydrogen plus chlorine yes अच्छा okay it happens सब लोग ये मुझे कल भी बोला था तो लोगों ने
Okay, so here it is given hydrogen plus chlorine giving hydrogen chloride in first it is given and in next step it is given in the form of reaction. बस खाली arrow पे लिखो diffuse sunlight गीला है ना वो sure मैं तो हमें क्या जो उसको गीला है ना तो बैक खराब हो जाएगा इसलिए पहले आगे करता हूँ. Then on arrow write down diffuse sunlight. The next method is by heating metal chloride with concentrated sulfuric acid. Heating metal chloride with concentrated sulfuric acid. Now again it is very simple. Metal chloride with concentrated sulfuric acid we have to carry out heating. Can you do this reaction by your own? Metal chloride दे देते हैं और metal chloride is NaCl. You know now what is formula of concentrated sulfuric acid? चलो करो try करो. Try to write down reaction metal chloride with concentrated sulfuric acid. हाँ? नहीं सर NaCl. दादा सब आए नहीं है ना अभी तक. चार ही है. चार ही आए क्या है ये मालूम. ये बोल रहा है इसको 11 बजे का कल ऐसे लगा उसको 11 बजे का क्लास है तो सब लोग 11 बजे ही सोच रहे हो. अपने सब टाइम टेबल से हम लोग तो 10 बार टाइम टेबल देखते हैं. अभी तीनों को मालूम है 10:30 बजे का देखते हैं. ओके NaCl with concentrated H2SO4 and we have to carry out this reaction with heating product Na2 and SO4 plus HCl. देखो ये this reaction is balance reaction. यहाँ पे लगाओ 2. ओके और NaCl के आगे भी 2 लगा दो. चेक करो एक बार फिर से 2Na 2Cl H2SO4. ओके चेक करूं मैं एक बार. In our book it is given the reaction is not given but on the next page it is NaHSO4 with HCl gas. So this is 1:1 proportion NaHSO4 with HCl gas. अभी चेक करो उसको. मैम वो उन्होंने प्रोडक्ट के साथ काफी उसको रिएक्ट किया तब जाके पहले चेक करो फिर देखो NaHSO4HCl. हाँ अब बोलो क्या बोल रहे हो. उन्होंने प्रोडक्ट के साथ काफी सेक्शन को रिएक्ट किया for this step. For this उसके ऊपर NaCl पे H2SO4 दिए हैं. उसके बाद डबल रिएक्शन दो. हाँ दो. अच्छा the one you said it is a final product है ना second step product but in first step the step number 1 it is obtained. So it is similar to that one which we have done in extraction of aluminium. NaOH is obtained. याद आया आपको in step number 2 NaOH is obtained which can be reused in step number 1. So here in step number 1 this product is obtained. It can be used. It is a main product of step number 2. Okay, so see the quantity of HCl. It is more. Step number 1 में भी आपको HCl मिल रहा है. Again you are getting HCl in step number 2. Okay, अगर कोई है वो नॉक करेगा जो भी कोई है क्या वो नॉक कर लेगा. लेकिन हमको क्या उन्होंने बोला है what is asked to us in this explanation part what is given metal chloride with concentrated sulfuric acid.
Right now, we are writing reaction of metal chloride with concentrated sulfuric acid. समझे? Understood ना? हम डबल स्टेप नहीं कर रहे. Whatever is given, metal chloride with concentrated sulfuric acid. अगर पूरा preparation पूरा बोला है, start including 2 step, तो question will be like that. It is only the preparation using metal chloride. तो by metal chloride you will get this reaction. सेकेंड स्टेप अगर बोल रहे तो हम सेकेंड स्टेप उसमें कर लेंगे, बट टिल नाउ इट इज ओके. चलो आगे करते, लिख के ले लो रिएक्शन. देन नेक्स्ट वन, लेबोरेटरी प्रिपरेशन. लेबोरेटरी प्रिपरेशन. टर्न करो, फिगर देख लो उसका पहले. फिगर इधर से बता दो, ड्रॉ नहीं करती हूँ फिगर. नाउ अगेन इन दिस फिगर यू कैन सी राउंड बॉटम फ्लास्क. In that round bottom flask, it contain HCl and concentrated sulfuric acid. Same reaction we are doing, huh? Concentrated sulfuric acid. ऊपर जो funnel है ना, funnel. From that funnel, concentrated H2SO4, it is slowly passed in that mixture. At once, it is not passed. ओके, पूरा के पूरा एक बार मिक्सचर बना के छोड़ना नहीं है. स्लोली स्लोली इट इज पास एंड द बॉटम पार्ट, दैट लॉन्ग कॉलम टाइप, इट इज डीप इनसाइड दैट मिक्सचर. उसको हैंग करके छोड़ा नहीं है बेटा. ये ड्रॉ सकती है. वैसे मेरी ड्राइंग अच्छा है, आप भी ड्रॉ करना स्टार्ट करो साइड बाय साइड. While making the figure, draw it neatly, label it properly.
Laboratory method, it is very simple and easy. होगा बना के इस स्टेप तक लास्ट स्टेप लेबल भी करो साइड बाय साइड एंड इवन लेबलिंग इज इजी इतना ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें only thing is to know the apparatus name. Those who are making figure with pen, be careful. अगर पेपर में really if you are getting good marks, the teachers know where they will reduce your marks. Oh, thank you, thank you, thank you. चलो, but let you आए रोज ले रहे थे टीचर दे भी बोल रहे बोल भी रही है रोज लेट आती है वेरी बैड नहीं मैम Thank you. रोज ले रहे थे क्या रीजन है वाओ ओके ओके पीछे किस लिए आ गया हाँ चलेगा पिलर पकड़ के बैठ जाए ओके आई हैव आस्क्ड यू टू सिट देयर How did you just do? Oh, red pen लेकर आए थैंक यू नहीं पढ़ना तो सबको है मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये आरओ भी अभी तक नहीं आया ऑनलाइन आज आपकी फ्रेंड नहीं आई वो राशि नहीं है ओह वन मोर गर्ल ना और एक है ना वो एक इसकी फ्रेंड है वो ही हाँ चलो बेटा हाँ रुक गए थे इधर 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 आ नो 10:30 आपको 11 बजे का मैसेज ओके ओके चलो देखो व्हाट्सएप में आई डोंट नो which WhatsApp group is there and what don't show me हाँ okay now please but I have to complete नहीं तो मुझे छुट्टी नहीं मिलती ना इसलिए मैंने बहुत स्लो किया है थोड़ा मतलब थोड़ा ही मैंने किया है वो तो ये भी बता देंगे क्विकली afterwards we will take quickly okay na? It is not so difficult only the first page we have completed abhi now if you are having volume page number we are on page number 2 हाँ आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है आई डोंट नो वेदर इट्स ऑफिशियल और अनऑफिशियल ऑफिशियल तो आप उनको बता दो हाँ सी दिस इज लैबोरेटरी प्रिपरेशन फॉर HCl गैस ना पहला इंपॉर्टेंट थिंग क्वेश्चन इज ऑन HCl गैस और HCl लिक्विड वो आपको क्वेश्चन बराबर से पढ़ना पड़ेगा whether it is gas or liquid now we are doing preparation of HCl gas hydrochloride gas का कर रहे हैं हम लोग अभी यहाँ पे देखो this is a simple very simple if you compare with the extraction this is a very simple figure and apparatus also you can easily name this is round bottom flask this is Hill's funnel this is delivery tube इसका नाम क्या है मुझे भी नहीं पता ओके कंटेनर बोल देते क्योंकि इट इज पैक्ड फ्रॉम वॉशिंग washer but washer bottle it is not like this then this is one container in which HCl will be collected now initially remove that container remove फोन भी ऑफ करके दे तो साइलेंट मार के रख दो हाँ फोन निकालना नहीं है बाहर okay now here we have mixture of
मेटल क्लोराइड जो रिएक्शन हमने लिखा था with concentrated sulfuric acid, it is heated slowly, gently. It is heated. Along with that, again one arrangement is there for continuous addition of concentrated sulfuric acid. Because reaction के बाद क्या होने वाला है? This mixture will form HCl. बराबर है ना? So the amount of concentrated sulfuric acid it will slowly goes on reducing. So this arrangement will keeps continuous addition of H2SO4. Now once the heating starts slowly, there is a formation of HCl. HCl. Now note two things that this particular thing it is in that mixture. ऊपर छोड़ नहीं दिया उसको इतना करके छोड़ नहीं दिया. It is still the end one thing. Another thing, by the means of this delivery tube, whatever HCl gas is formed, it is again passed in concentrated sulfuric acid. We know what is property of concentrated acid. It is act as a drying agent. So if it contain any moisture, it can be removed out. बराबर है ना? Because we are preparing only the gas. Once that moisture it is completely removed by the means of this delivery tube, it is passed in the another beaker or container जो भी कुछ है. So initially it contain air. बराबर है ना? कुछ नहीं है तो उसमें air रहता है. But as this hydrochloric acid it is heavier than air, this air it will go out and in that container HCl gas will be collected. So by arrow it is indicated it is collected. Now when you are making this, without forgetting show this burner. यहाँ पे stand भी बनाना पड़ेगा जो मैं बनाना भूल गई हूँ. Please बना लो stand. ऐसे hang नहीं करना. And this caps are present in order to have support. So this method it is very simple and easy. Even we can prepare in that. बराबर है ना? And advantage of this method is we are using HCl, which is very. कौन silent करो? किसका था वो? HCl, sorry, NaCl, which is very cheap, easily available. You can take rock salt also, कोई problem नहीं है, and we can prepare plenty of HCl gas by using this process. Understood? कुछ भी उसमें दिक्कत नहीं है. It is very very. बेटा क्या कर रहे हो नीचे? Otherwise keep your phone there. रखो उधर टेबल के ऊपर. हो गया? This thing you have made. Explanation you can write quickly in your own words. ज्यादा मत सोचो, जल्दी जल्दी लिखो. Write in your own words. If you want quickly read what is given in this one volume. Procedure एक बार पढ़ लो and write it quickly. फटाफट हाँ. ज्यादा टाइम मत लगाओ. Be fast. Within 2 minutes you can complete it. And once you complete the explanation part, please write two-step reaction. One step we have already completed. इसको आगे लेके complete the second step. Please don't copy everything from your volume. Just एक बार read करो and write in your own words. Looking in the figure, write in your own words. कहाँ हाथ तोड़ दिया? Stitches वाला. Bone को कुछ हो गया. Stitches.
Then write down reaction now. First is here, second से यहाँ पे देखो, ये हमारा नॉर्मल वाला प्रिपरेशन है यूजिंग मेटल क्लोराइड एंड H2SO. अगर इतना ही पूछा है, राइट प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस from metal chloride, then you have to write down this step only. अगर वो ऐसे पूरा बोल रहा है by laboratory method, then give 2 step. In 2 step, this is the first step, and second step again take this product and treat it or react it, heat it with concentrated H2SO4 and heating. Second step again you will get HCl with sodium sulfate. आएगा ना लिखने? ट्राई कर चलो. अभी ये जो मेरे मुंह में बार बार ट्रीट आ रहा है ना, actually for 12th standard we are taking reaction part, and that some reactions are heated on heating and some are treated. When it is treated, heating is not done. तो ये treated heated मेरे मुंह में आपको बहुत सुनाई देगा. सेकेंड स्टेप, ओके. सेकेंड स्टेप तो आपको इजीली आता है, आपने पहले भी किया था सेकेंड स्टेप. And for second step, temperature is above 200 degrees Celsius. In our volume, 2 points are again given. यहाँ पे देखो on page number. It is about that 100 degree Celsius from sodium sulfate in the If it is above 200 only. Below नहीं है. 14 form करेगा ना. नहीं, ये जो reaction है ना, it is happening above 200. वो बोला. ऊपर वाला you are saying, first one you are saying. नीचे वाले. तो ये एनर्जी वर्सेस कंपैरेबल जो फ्लास्क में 14 बना है. ये फ्लास्क में कोटिंग बनाएगा है, आगे दिया है. It is given कोटिंग वाला पार्ट. Okay, now in volume again 2 points are given. Sodium chloride, it is cheap. Right now, it is cheap, it is easily available. And second point it is given. So concentrated nitric acid is not used during preparation of HCl because it is volatile. Volatile and may volatilize out along with hydrochloric acid. Means 3 acids we have: HCl, nitric acid, sulfuric acid. HCl बनाने के लिए we are using H2SO4. We are not using nitric acid. What is the reason? Nitric acid is also volatile, and along with HCl, ये HCl जो बाहर निकल रही है गैस, उसके साथ में वो भी निकल के चला आ जाएगा. इसीलिए not nitric acid is not used. Okay. Then here one more thing is given. Though it is a reversible reaction, means this reaction formation it is reversible. जैसे कि ये बताया है, हमने क्या किया फर्स्ट स्टेप में HCl with H2SO4 we are getting this. Second step with this compound again H2SO4, final HCl will be formed, but as this reaction is reversible, okay, तो क्या करना है उसमें reversible, yet it goes to completion of hydrochloric, continuously escape of gas is required. अगर आप रख रहे हो उसके अंदर, हाँ, लीच-एटलियर प्रिंसिपल है आपको, लीच-एटलियर प्रिंसिपल हैबर्स प्रोसेस है ना, हाँ, उसमें लीच-एटलियर प्रिंसिपल वो हम डिस्कस करेंगे. देखो लिमिटिंग एजेंट भी नहीं जाएगा ना. हाँ, एक मिनट मैं एक एग्जांपल देती हूँ. वॉल कॉन्सेप्ट में लिमिटिंग एजेंट इसके पहले ब्रेड का एक पैकेट है मेरे पास में, छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं लेते, छोटा वाला लेते हैं, और आधा किलो का जैम का जार लेते हैं. Okay, so for in that there will be hardly 10 to 12 slices of bread and half kg of jam. Okay, इन दोनों में ज्यादा कौन सा है? जैम. तो जब आप अप्लाई करोगे आपका जो ब्रेड है वो तो फिनिश होने वाला है, बट जैम का कंटेंट इट विल बी रिमेन ना. सो विच इज अ लिमिटिंग वन? ब्रेड.
but that jar contain excess of jam till the end you can utilize for next bread packet. दो चार जितने होते हैं हम अप्लाई कर सकते हैं उसके अंदर. So this bread packet वो क्या कर रहा है आपका वो जो प्रोसेस है it gets stop at that moment unless and until you open the another bread packet. सेम लाइक दैट अगर आपके पास में बड़ा वाला ब्रेड का पैकेट है तो आपका प्रोसेस स्टॉप नहीं होने का है ना. इट विल कंटिन्यूस will going on same like that in this reaction mixture. If your product is also present along with the reactor, then reversible reaction will take place. Reversible फिर से वही आपके reactor वापस आ जाएंगे. फिर से वही reactor वापस आ जाएंगे. For example, the reaction is in between A and B. Okay, one step we have done forming C and D. Okay, बट ये मैंने निकाला ही नहीं है इसमें से वो कंटेनर में ही है वो बाहर ही नहीं निकला है. एंड व्हेन वी आर सेइंग रिवर्सिबल अगेन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ए. तो नहीं निकालेंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा अगेन यू विल गेट द रिएक्टेंट. बट व्हाट वी आर डूइंग वी आर रिमूविंग वंस HCl इज फॉर्म इट इज रिमूव्ड इट इज टेकन आउट. तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था ना ये मिक्सचर है बट अलोंग विद दैट देयर इज अ सप्लाई ऑफ H2SO4. HCl जैसे फॉर्म हो रहा है बाय द मींस ऑफ डिलीवरी ट्यूब इट इज पासिंग concentrated H2SO4 means it is removed and again we are adding H2S. अगर ये रिमूव नहीं कर रहे तो क्या होगा क्या होगा रिएक्टर फिर से फॉर्म होने वाले हैं याद रखना. तो जैसे मैंने बोला था रिमूवल हेल्प्स टू स्टॉप दैट पर्टिकुलर रिवर्स रिएक्शन. अगर नहीं निकालोगे तो रिवर्स हो जाएगा. एग्जांपल हमारा वो ब्रेड एंड जैम का पैकेट अगर छोटा ब्रेड ले रहे हो आधा किलो जैम के साथ में तो खत्म होने वाला है. ब्रेड तो खत्म ही होने वाला है ना. तो आपका प्रोसेस स्टॉप हो. बट इंस्टेड ऑफ दैट इफ यू आर यूजिंग बिग पैकेट दैट प्रोसेस इट विल गो जब तक जैम खत्म नहीं होता या तो एक्स्ट्रा नहीं लगा तो वो प्रोसेस वैसे ही चालू हो जाएगा. लिमिटिंग एजेंट नहीं मैंने आपको समझने के लिए वो एग्जांपल दिया है. लिमिटिंग एजेंट यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है तो कंटिन्यूसली देयर इज एडिशन ऑफ H2SO4 एंड रिमूवल ऑफ HCl. NaCl तो है बट NaCl उसमें ही है H2SO4 हम डाल रहे हैं. लिमिटिंग एजेंट मैंने सिर्फ समझने के लिए बताया है करके हमारा प्रोसेस अगर हमको स्टॉप करना है एट एनी मोमेंट तो कोई तो एक चीज लिमिटेड सप्लाई में चाहिए. अब भी रिवर्स रिएक्शन को अगर हमको स्टॉप करना है तो हम क्या करेंगे HCl को निकाल देंगे बाहर. HCl जैसे बाहर निकल जाएगा क्या होगा देयर विल बी नो चांस फॉर फॉर्मिंग द रिएक्टेंट अगेन. समझ में आया. वो तो सिर्फ ऐसे समझने के लिए कि थोड़ा कि बाबा ये ऐसा चीज होता है. लिमिटिंग एजेंट आपको शायद उसमें हैवर्स में नहीं है इसमें अमोनिया में नहीं रहेगा रह भी सकता है अगर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन रहा तो अदरवाइज आई डोंट थिंक रिएक्शन वाला पार्ट ही रहेगा. देन नेक्स्ट वन here purification of HCl gas. Now here clearly it is given in order to remove the moisture what we have to use concentrated H2SO4 ये उसमें दिया है but along with that we can also use P2O5. This P2O5 will also help to remove the moisture from that. So write down purification of HCl gas. Or what can be used and what cannot be used. This can be your MCQ question now, or you can have for assertion and reasoning also. It is dried by passing through concentrated sulfuric acid. फॉर्मूला लिख दो बस हो गया पूरा लिखते मत बैठे. Put full stop. Other reducing agents are agents like phosphorus pentaoxide फॉर्मूला लिखो and quicklime can be used. Can be used in volume it is given cannot be used. Volume में मैंने cannot be हाँ वही हाँ but reaction is can be used में. अच्छा लिखो cannot be used मत लिखो can be used.
since they react with hydrogen. हाँ 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 नहीं यूज कर सकते अच्छा रिएक्शन हो जाएगा हाँ तो वो बेसिक गैस और हाँ अच्छा ओके ओके रिएक्शन हो जाएगा रिएक्शन करने के लिए ही हम लोग कर रहे हैं ना सर बट cannot be used right it cannot be used देख रही थी चेक कर रही थी है ना तुम लोग यहाँ पे हाँ के टीचर्स डे मनाने चले गए cannot be used so this reducing agent cannot be used even this beaker it is wash क्या है wash bottle washer bottle it is filled with concentrated sulfuric acid लिखो वहाँ पे cannot be used थोड़ा ऐसा चेक करना पड़ता है ना पता चलेगा मास के प्लेस में आपने मार्स लिख दिया तो फिर cannot be used again reactions are given here write down those reaction one first reaction is with phosphorus pentaoxide and other is with this one quicklime phosphoric chloride and another is phosphorus acid huh? अगर नाम चाहिए oxychloride and another is phosphorus acid pencil ये वाला cannot be used का प्यूरिफिकेशन पेंसिल या कौन सी सल्फेट कौन से नॉन सल्फ्यूरिक एसिड उससे हाँ उससे ही पूरा आता है यहाँ पर है ना यहाँ पे ये मॉइस्चर निकालेगा हमको मॉइस्चर ही निकालना है क्योंकि हमको गैस बनाना है आपको फॉस्फोरस कंपाउंड्स भी नहीं है ना हो गया दोनों रिएक्शन लिखा हाँ तो अभी याद रहेगा ना what we are using for purification and not pentaoxide and चलो आगे करते हैं कलेक्शन कलेक्शन में क्या क्या हमने लिखा है हाँ upward displacement of air or whether it is collected over water why because it is highly soluble soluble in water so that gas will be converted into liquid hydrochloric acid liquid form में convert हो जाएगा so write hydrogen chloride gas is collected by upward movement of air और रीजन क्या है अपवर्ड मूवमेंट के लिए वो तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था ना इट इज हेवियर देन एयर सो व्हाटएवर एयर व्हिच इज प्रेजेंट इन दैट कंटेनर इट विल गो आउट व्हाट वी वांट एंड नेक्स्ट वन it is collected over water since it is not collected over water since it is heavier than, soluble in water now next part it is a identification okay identification मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ how we are doing identification I think for class 9 और 10 मुझे पता नहीं 9th में ही practical chemistry है अभी भी है so in that identification of different radicals it is given there identification इसका भी आइडेंटिफिकेशन है ओके तो प्रैक्टिकली हाउ वी आर डूइंग दैट आइडेंटिफिकेशन वो मैं आपको बता देती हूँ फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग NH4Cl सॉल्ट ये कंपाउंड है बट नॉर्मली इन अवर प्रैक्टिकल लैंग्वेज वी कॉल इट एज अ सॉल्ट नाउ इन दिस सॉल्ट देयर इज HCl
Okay, HCl. So normally how we are doing, we are taking some amount of salt in a test tube, thoda sa lena hai, 1 pinch of salt, and in this salt, NH4Cl, we add HCl. डाल दिया यहाँ पे HCl. Once we add HCl, तो क्या होने वाला है? Here we will get fumes. They immediately they are not dense. पहले हो गया हाँ क्या रिएक्शन हो गई इसका गैस आता है, अब दोनों का नहीं होगा क्योंकि दोनों सीरियल हाँ रहने दो ना, लेकिन उसका रिएक्शन होता है, हम करते हैं, उसका रिएक्शन होता है. हाइड्रोक्साइड Agree. This is not H2HCl, this is H2SO. H2SO4, ये देखो, इसका रिएक्शन होता है, देखो है ना, ये वाला रिएक्शन होता है. थैंक यू. NH4Cl with H2SO4, there is a formation of white color gas. Now this gas, it is white in color, और इसके fumes है ना, they are thin fumes, ज्यादा ऐसे thick fumes नहीं रहते. So in this test tube, I have added H2SO4. I will get colorless gas. वो दिखाई देती है gas. Now this colorless gas, it is slowly coming out. In another bottle, if we have NH4OH solution, हम क्या करेंगे? We will dip a rod and keep that rod dipped in that solution near the mouth of the test tube. Near the mouth of the test tube. Once I keep this rod which is deep in NH4OH, whatever thin fumes are there, they are converted into thick or dense fumes. Okay, so ये thick or dense fume, these fumes are of HCl. Okay, and we are using this test for detection of Cl negative radical. ये हम लोग लैब में सीखा. समझ में आया? हमको एक अननोन कंपाउंड दे देते हैं, मैंने आपको कंपाउंड बता दिया, सॉल्ट बता दिया, इट इज NH4Cl. So in NH4Cl we add H2SO4, concentrated H2SO4. Okay, with the reaction आपको दिख रहा है ना क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है? यहाँ पे HCl मिलने वाला है, but that fumes they are thin, less. So second step is keep rod dipped in NH4OH near the mouth of this test tube. We will get dense. So the gas which is coming out, it is HCl gas, and normally we are doing this test for detection of Cl negative radical. क्योंकि आप जब 11th में जाओगे तो आपको मेरे जैसे टीचर है तो कंपाउंड का नाम नहीं बताएगी, आपको खुद फाइंड आउट करना है कंपाउंड का नाम. Otherwise for the chloride compound they are doing this in order to find out which acidic radical is present. समझ में आया? अभी हमारे बुक में क्या दिया है देखो. When the jar is completely filled with hydrogen chloride, fume appear above the jar's mouth. Okay, it contains gas, so there will be fumes. When hydrogen chloride gas is exposed to air, it gives white fumes due to formation of hydrochloric acid on reacting with atmospheric water vapor. बराबर है ना? यहाँ पे इसमें से moisture निकाला था, but when it comes in contact with the air, it will be converted into liquid hydrochloric acid. In order to know whether the gas jar is full, bring a rod dipped in ammonium hydroxide, वो वाली step, ammonium hydroxide near its mouth. उनको अलग बिठाया था. हाँ, और जब से वो ठीक है, they are not creating any issue, both are comfortable. अब आने के साथ में तुझे क्या हो गया? तो देखने से क्या होता है? ये देखो, ये तो फिर सब देख लेंगे. HCl with NH4OH, NH4Cl plus H2O. यहाँ पे दिख रही है आपको रिएक्शन. So NH4Cl, देखो see again, the salt which I have taken, it was NH4Cl. Okay, I have started with NH4Cl. Again, that NH4Cl it react with H2SO4, right? तो H2SO4 के साथ में what is the product there? मैंने बताया था ना, लेट वाली गैस आएगी,
वहां पे लिखा तो मैंने बाद में इरेज कर दिया HCl gas will be formed. Okay, now next step what we are doing, we are keeping rod dipped in NH4OH right now. So what happened, again this HCl will react with that NH4OH to form the NH4Cl, and the original what is reactor, no, it indicate presence of HCl in that thing. In that complete arrangement experiment whichever we are doing, dense white fumes, देखो वहां पे लिखा हुआ है dense white fumes of ammonium chloride will be produced, proving thereby that jar is full with hydrochloride gas, not acid. That step it is given कि वो गैस आने के बाद में it will be converted into moisture, it will react with the moisture to form hydrochloric acid. वो एक sentence दिया है, but actually what is happening, see this step it is not given in our right now, this is not given. So when this salt it combined with H2S, so what there will be formation of white dense होने वाले, no, little bit light fuse. But when we keep the rod deep in NH4OH, whatever gas is there, HCl gas है, it will combine with this one to form original NH4Cl, but that NH4Cl it is forming dense fumes. What does it indicate? That gas which is present, it is HCl gas. याद रहेगा, two-step process है. If you are giving from this, कराया था ना, आए थे ना, अच्छे खासे डेंस फ्यूम्स आते हैं, और मोस्टली इट इज पॉसिबल इन अमोनियम क्लोराइड ओनली. हेलोजन वाला कंपाउंड अमोनियम क्लोराइड ही देके कराते. तू तो उसको ऐसा मारेगा, मैं तो उसको पकड़ के कैसा कैसा मारूंगी तेरे को नहीं समझ में आने वाला. उसको तू बोल भी मत कुछ, मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करने दे, आफ्टरवर्ड्स वी विल हैव फन. चलो करो. अच्छा, now tell me explanation quickly you can write. Quickly लिखना है, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो. Already completed. Write down reaction. Reaction लिखो. हाँ, reaction लिखो. And और एक चीज, आपने कौन सा वाला क्वेश्चन मुझे पूछा था? वो उसने मेरे कुछ तो बोला था, लेकिन मैंने उसको वो प्यूरिफिकेशन. हाँ, वो तो पहले इसमें होता है. बेटा रिएक्शन लिख, उधर आर्टिस्टगिरी मत कर, रिएक्शन लिख. और ये जो HCl बना के जाता है, ये फूल के टाइम में हो सकता है, ये वाला होना तो चाहिए, पर नहीं करते. स्कूल वाले सारे हम लोग भी इवन वी आर परचेसिंग HCl लिक्विड डायरेक्टली करते नहीं. H2S गैस नहीं बनाते तो ये क्यों बनाएंगे? कहीं नहीं बनाते हैं, पर पता नहीं. बनाया था वो तो थोड़ा सा बनाया रहेगा ना. ग्रुप डिटेक्शन आपको नहीं है ना? ग्रुप डिटेक्शन है आपको. आयन क्या है? कॉपर, अमोनिया की खुशबू, वो तो ऐसी भी फ्री में मिल जाती है. वॉशरूम के बाहर. ओके चलो, डन. राइट डाउन रिएक्शन. ओके, मैं तो तुम्हारा सेंटर का तारीफ करती हूँ बाहर जाके, कि बच्चे पिछड़े जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करते, और ये बच्चे तो भी डिबेट में लग रहे हैं. ओके, नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट वन. डन. Now from this HCl, from this, हाँ नहीं, ये वाला मेन था ना हमारा फर्स्ट रिएक्शन. इसमें से जो HCl होगा, it will come सेकंड.
उसे दोनों भी लिखा है, आपने नहीं लिखा रिएक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके। और सेकेंड स्टेप में दिस वन, तो हमें फ्यूम्स भी लिखो ना, डेंस व्हाइट फ्यूम्स, write down that also, it is important. See, they have written both the reactions, this one complete this reaction and the second one which is given in our book, but after you write down that reaction na, fumes likho kaise hai wo, white thin fumes, whereas with rod of NaOH they are white dense fumes, write it down. Then next one, precautions. कहाँ पे आपके बुक में तो वो पॉइंट ही मेंशन है, फर्स्ट स्टेप, राइट ना? First reaction it is not given in your book, they have given only the second one, but मैंने क्या बोला है, actually this is a procedure. First step we are preparing HCl उसमें डायरेक्ट नहीं है, we are preparing with the help of H2SO4, and second step में हम लोग क्या कर रहे हैं, whatever HCl we have prepared we are treating it with NH4OH rod, ऐसा टू स्टेप वाला काम कर रहे हैं, समझा ना? है क्या कहीं पे HCl फर्स्ट स्टेप में? नहीं, तो बनाना तो पड़ेगा ना, डायरेक्टली थोड़ी ना NH4OH रॉड रख सकते, समझ में है? नेक्स्ट ले लो, प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस आर वेरी इजी, पहला वाला तो मैंने आपको यहाँ पर फिगर में ही बताया था, व्हाट इज द फर्स्ट वन? देखो अभी भी दिख रहा है वो, डिप, ऐसा छोटा वाला थिन फनल यूज नहीं करना है, इट शुड बी डिप प्रॉपर्ली इन दिस मिक्सचर, ये इतना सा छोटा सा नहीं, पूरा पूरा कंटिन्यू डिप यहाँ तक है यहाँ पे, एंड यू विल फाइंड अंदर तक नहीं जाना चाहिए बराबर से, नहीं तो गैस ब्रेक से हो जाएगी। अगर वो नीचे तक एकदम नहीं लगा तो उसके साइड में वो पॉप तो होगा ना, लाइक काइंड ऑफ पॉप बैक, इसके साइड बाइट में अगर वो ऊपर रहेगा पानी में तो उसके लिक्विड है तो पाइप के अंदर चलो चलो नेक्स्ट ले लो, द लोअर एंड ऑफ द दिस funnel must be deep in concentrated sulfuric acid. Delivery tube should be deep in the drying agent. Temperature is maintained at nearly 200 degrees Celsius. बराबर है? कम ज्यादा टेम्परेचर करोगे, so there will be high chances of obtaining or having the reversible reaction. Huh? If you are not removing HCl time to time, there are chances of having reversible reaction. Then टेम्परेचर ज्यादा है तो फ्रेश होगा। नीचे दिया है देखो, next point में it is given, apparatus which is made of glass may crack, last point दिया मिला? Then at high temperature above 200 degrees Celsius, अगर आप बढ़ा रहे हो temperature, first step में if you are increasing temperature above 200 degrees Celsius, so what can happen? Apparatus which is used may get of glass may crack, बराबर है ना? Then second one, fuel is wasted, ज्यादा एनर्जी लगा के फायदा ही क्या, when it require only 200. Then sodium sulfate form a hard crust which stick to the glass and it is difficult to remove. वो अंदर ही जम के रह जाएगा, उसको बहुत डिफिकल्टी से रिमूव करना पड़ेगा। इसका एक्सेसरी भी करता है, इसको सोडियम सल्फेट को अंदर हार्ड क्रस्ट फॉर्म करता है, कौन सा एसिड से रिमूव करेंगे उसको? भाई लेकिन वो इट विल बिकम हार्ड टू रिमूव ना, ऐसे फटाफट नहीं निकले, क्योंकि वो ग्लास वेयर है, उसको हीट करो, टेम्परेचर मेंटेन करके रिमूव करो, इट विल टेक मोर टाइम। नॉर्मली सी व्हाट हैपेंस, द टेस्ट ट्यूब व्हिच यू आर यूजिंग ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, तो वो बहुत खराब हो जाता होता है ना, उस पे सब चिपक जाता है, स्टिकी होता है, सॉलिड बहुत हार्ड स्टिक होता है। सो व्हाट नॉर्मली इफ इट इज इन बिग स्केल ना, तो बड़ा सा कंटेनर लेके उसमें नाइट्रिक एसिड डाल के सारे टेस्ट ट्यूब बॉइल कर,
और स्लोली वो अंदर वाला कंटेंट, बट इट इज वेरी डेंजरस, हाँ, स्लोली वो अंदर वाला कंटेंट उसका रिमूव करते हैं। और इफ इट कंटेन एनी मॉइस्चर, अभी वो नाइट्रिक से धो दिया गर्म करके, मॉइस्चर है तो एसीटोन डाल के उसको ड्राई करते हैं। लेकिन उसके लिए टेस्ट बहुत ज्यादा रहती है, थोड़े थोड़े 2-4 टेस्ट करते हैं, नाटक नखरा नहीं करते। Then physical properties. Now physical property means only the physical appearance. Things are given in the table. First thing color. Color, it is colorless. Then smell. वहाँ पे देखो टेबल देखो. Smell, it is again having pungent smell, but this pungent smell it is not very similar to ammonical smell. अमोनिया का भी हम pungent बोल रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा अजीब ही smell रहता है. हाँ. Then and one more thing, I don't know next year how many of you will take admission in science. Okay, अगर स्मेल वाला कोई टेस्ट है, स्मेल वाला, हाँ, हीट इट, स्मेल इट, एड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO फॉर स्मेल इट, या तो फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिकल करने जा रहे तो मजे लेने के लिए स्मेल करते हैं, प्लीज डोंट प्ले विद योर unless and until it is mentioned it here, smell it strongly, तभी ही करना है, नहीं तो एसिड लोगे कॉन्सेंट्रेटेड और स्मेल करते बेटा, सिस्टम खुल जाएगा। Then there's लिक्विड भी हमारी मैम ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए एक्सेल के साथ, वो मैम होती कॉन्सेंट्रेट भी होती नहीं नहीं तो दिशा स्मेल करना है, नहीं नहीं नॉर्मली उसको ये जो बता रहे हैं ना हम, वो पंजेंट स्मेल नॉर्मली बिकॉज gas it is converted into this one liquid. हाँ, तो वो जहाँ पे बन रहा है, जहाँ पे उसका फैक्ट्री है ना, उधर ही आएगा, अदरवाइज अपने को यहाँ पे नहीं आने वाला। एनीवेज वी आर नॉट गेटिंग गैस डायरेक्टली, दिस टेबल इज फॉर गैस, देखो ऊपर है ना, ऊपर गैस लिखा हुआ है, दिस टेस्ट आर नॉट फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड इट इज इन लिक्विड। तो हमारे जो लैब में यूज का हो रहा है, वी आर यूजिंग लिक्विड एसिड नॉट द गैस एसिड। समझ में आया? ये पॉइंट्स किसके लिए है? गैस के। अंडरस्टूड? देन टेस्ट as it is acid, it will be sour in taste. Then physiological nature, it is corrosive in nature, it irritates nose, throat and lung. तो स्मेल करोगे, गलती से भी नहीं करना, हाँ, कोई भी, यहाँ पे HCl गैस दिया हुआ है, but make sure you are not smelling any of the acid, any of the mixture which is prepared by concentrated acid. बेस वाले का भी होता है, पर कॉन्सेंट्रेट का ज्यादा इफेक्ट होता है। देन नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इज गिवन, लिक्विफिकेशन एंड सॉलिडिफिकेशन इज गिवन, टेम्परेचर्स आर गिवन, okay, that you can do rectification of this temperature, these values are very important। बेटा उसको ऐसे छोड़ के यहाँ पे बैठ जाए। solubility, so पिलर के पीछे से हट जाना, फेस देखते हैं। ओके, solubility, it is soluble, highly soluble in water। ये तो पॉइंट हम लोग स्टार्टिंग से ही करें, देखो यहाँ पे दिया है 1 volume of water dissolve, 1 volume of water dissolve 4, 5, 2 volume of gas at room temperature। मतलब सोचो कितना बड़ा क्वांटिटी है, a huge amount of HCl gas can be dissolved in small quantity of water। HCl being covalent is soluble in organic non-polar solvent such as acetone and benzene। Okay, see the terms: organic, non-polar. Okay, organic means what? Chemistry. Organic, hydrogen and carbon compound, mostly organic are carbon compound। Okay, hydrocarbon ये हमको एक part है। Then such as acetone and toluene। Acetone, what is formula of acetone? अभी मैंने just acetone का शायद नाम भी लिया था। What is formula of acetone? Whether we are using, girls, you are using acetone? Yes. Nail polish remover। And toluene, नहीं, मैं उसका फॉर्मूला पूछूं, टॉलिन का, इट इज एरोमेटिक और एलिफेटिक,
एरोमेटिक। क्या स्ट्रक्चर क्या है टॉलिन का? यू नो स्ट्रक्चर ऑफ टॉलिन? क्या पता? पहली बार Acetone is CH3 COCH3. This is acetone. Okay, one which you are using in your for removing the nail polish, and it can be also used as a drying agent. Drying agent means to remove the moisture. वैसा वाला drying है. And toluene, it is aromatic compound. So benzene ring with CH3. This is toluene, and this one benzene ring with OCH3. It is anisole. चलो. हाँ? ये वाला, this is benzene. Benzene is again non-polar. Okay, इसमें poles positive negative charge form नहीं होते. Okay, organic उन्होंने पहले ही बोला it dissolve in organic. Okay, soluble in organic. Toluene benzene ring with CH2. इसको मिथिल बेंजीन भी बोलते हैं. And anisole, it is benzene ring with OCH3. समझा? अभी लिख के रखो, कभी कहीं पे पूछ लिया गलती से तो पॉसिबल नहीं. आपके इसमें कुछ भी पॉसिबल है, किसी कुछ भी नहीं. तो दिस आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट गोइंग टू द एक्सपेरिमेंट. अब यहाँ पे भी छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट है टू शो HCl गैस इट इज हेवियर देन एयर. क्या काउंटर है दिया है, काउंटर पीछे दिया है, फिर फनेल वाला भी दिया है टू प्रिपेयर HCl लिक्विड. ओके चलो यहाँ पे solubility is heavier than air देखिए हम लोग. हो गया फाइट तुम्हारा खत्म. चलो नेक्स्ट करते हैं. हेडिंग डाल के रखो टू शो HCl गैस इज हेवियर देन एयर. एक्सपेरिमेंट यहाँ पे बहुत सिंपल सा छोटा सा दिया हुआ है, रीड करो उसको. It can be proved by pouring gas in a jar with a burning candle. Gas in the jar with a burning candle. The candle get exhaust gas HCl gas being heavier occupy the lower portion of the jar and force the air to go out. अभी सेम चीज हमने यहाँ पे भी देखी थी. Okay, this beaker, this container, it was empty container. Okay, in empty container what happened? This formed HCl gas is passed slowly as it is heavier. The air which is lighter, it is given out, pushed out, and this complete thing it is known as upward displacement. अभी करना क्या है यहाँ पे? We have one. Here we have one beaker containing candle, burning candle. Okay, ये तो burning candle तो वैसे भी जलने ही वाला है, right ना? If you keep here one more beaker containing HCl gas, slowly this all air will go off. हाँ, और HCl gas यहाँ पे आ जाएगा. हाँ हाँ हाँ. So this proves that it is heavier than air. तो ये one of the property. I think this given somewhere ना, मैंने पढ़ा है यहाँ पे, किसी आपकी बुक में पढ़ा है इसको. देखते कहाँ पर है. तो इतना छोटा वाला एक्टिविटी, do you think they will ask you for the reason? MCQ में क्या पूछेंगे? Heavier than. So मैम वो डायग्राम दे देंगे और पूछेंगे. Anything is possible. मैंने पहले ही बोला. नीचे ब्लू लिटमस क्वेश्चन होता है, लेकिन मतलब आप ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे तो फिर ऊपर से कौन सा क्वेश्चन?
फिर सबने सबने कंफ्यूज होके वो रेड लिख दिया ओके अच्छा लिटमस पेपर का आपने याद अच्छा दिया टू लिटमस पेपर वी हैव ब्लू एंड रेड बराबर एसिड कौन सा लिटमस पेपर एसिड ब्लू टू रेड acid A, blue to red. Remember this sequence. Acid A, so your blue litmus paper it will turn red. Base, red to blue. तो ये सीक्वेंस आप याद रखो जैसे अभी कंफ्यूजन हुआ वैसे कंफ्यूजन नहीं होने वाला हाँ पेपर में योर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड हाँ अभी आप ये मत पूछना ये लिटमस पेपर सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं तो it is formed by making many reagents together. You can have either paper or you can have the solution. कुछ भी काम में पेपर फाउंटेन में हाँ लेकिन वेट तो अगर इसके लिए if they are asking you MCQ or case study so there is a high chances of asking for that also जो रिसेंटली हमने कंप्लीट किया है ना बक्साइड वाला एक्सट्रैक्शन तो बक्साइड तो ऐसे मतलब नींद में भी तुमको धक्का मारेंगे तो बक्साइड का एक और ईच एंड एवरी सेंटेंस यू शुड नो चलो नेक्स्ट राइट ना टू शो HCl gas is highly soluble HCl gas is highly soluble अभी quickly make that figure label it properly हाँ फाउंटेन वाला label it properly हाँ लेकिन अभी इसमें एक्टिविटीज में so many activities are given अभी तक till now how many reactions we have completed 2 from your textbook 3 from your book वॉल्यूम में से बराबर है ना ये एक तो मैंने आपको दिया है मतलब देखोगे तो बुक के हिसाब से ओनली 3 till now it is 3 and activity में one this experiment एक मैं ask you this second one एवरेज पेपर बनाने के लिए थोड़ा तो कुछ सिंपल देना पड़ेगा ना उनको सब डिफिकल्ट नहीं देते every time this supporting stand is there huh? Normally उसको burette stand बोलते हैं by the means of clamp you can put here any of apparatus properly fix sleep tight जरा भी वो हिलने डुलने वाला नहीं वहां पे अगर उसको रस्टिंग नहीं हुआ है बेटा do your work stop talking
नीचे अगर blue है तो ऊपर red आता है, नीचे red आता है तो ऊपर। हम लोग एसिड में इसको यूज करने वाले हैं ना, तो एसिड रेडी है ये। अभी बताया ना एसिड blue to red. Let the litmus paper it turns red, and for base red to done. Okay, now see this complete activity. It is very simple and easy. Round bottom flask which contain HCl. बराबर है. Here one dropper is there. Once you press it, तो क्या होने वाला है press करने करने? Immediately. This solution, it is blue litmus solution. Okay, so after pressing it, whatever with the pressure of the air, पड़ा है अभी, lighter, heavier, everything we have done. So what happened? This blue litmus solution, it is raised up in this long tube. यहाँ पे long tube जो बताई है, long tube, and due to presence of hydrochloric gas, which is acidic in nature, blue color solution, it turns red. Okay, very simple and easy activity. बेटा वो question क्या था वहाँ पे जो था वो? वो क्वेश्चन था कि यूजुअली तो ब्लू से रेड जाता है, तो अगर हमने चेंज कर दिया नीचे रेड कर दिया तो फिर ऊपर पड़ता है, तो कौन सा कलर आएगा? रेडी है नहीं रेड ही आएगा। अगर HCl ना तो रेडी क्या है? अगर instead of using blue litmus solution, acid is same, HCl ही है यहाँ पे, इसकी blue के बदले अगर red ले रहे हो, तो will there any change in the color of this solution? No, because acid, blue color, blue paper or blue solution, it turns red. Acid with red solution, no change. बराबर है ना? Right now, acid, blue, remember, if you want, note it down. Acid, if you are changing the gas, then there is a possibility. Okay, instead of using basic gas, if you are acidic gas, if you are using basic gas, तो उल्टा उधर भी उल्टा हो जाएगा, इधर भी उल्टा करना पड़ेगा. अगर आपको कलर चेंज देखना है तो. Otherwise not. Acid, blue litmus solution to red, and base, red litmus solution to blue. कितना यूजेस है, टेस्ट है, ये मेरा सब कुछ यहीं पर रहने के हैं, कुछ नहीं हिला. वैसे नहीं करो जब ज्यादा से ज्यादा अपना फोन नहीं हिला, बराबर है. हाँ, नहीं इसमें उसमें देखा तो क्या करके देखा तूने? मैं मान जा ये भी लो इसकी मैं नहीं खाती तो लॉस्ट हो जाएगा टेबल में सा म्यूजिक बस वो थम जाएगा कैंडल थम जाएगा एक सेकंड कुछ भी है खाना सबका है अरे पेपर से भाई क्या अरे आदर बीच पर तो क्या क्या मैं तो मेरी नजर बनाने में क्या करूं? ब्रो ऐसे ही बोलता हूँ किसी को इग्नोर नहीं होता किसी को इग्नोर करके कैसे चलेगा तो वो लोग ना इतना क्या है? मैनेज करूंगी मैनेज करना ये भी मैं तो सब्जी वाली की खाती मैंने आधा खाती ये मटको भी डालता है मैं मसाला में हमेशा
सो मैं तो हमेशा ना आटा वाली मैगी खाती हूँ इतनी बार पता है इसकी डबल मसाला मैगी इसलिए तो मैं आटा खाती हूँ क्यों आटा मैगी बता तो नहीं करती हूँ एक आध उसके आगे भी खाएंगे तो आ जाएगा हम हमारे पास कभी पर आटा मिलेगा रात का ऐप तो मैं तो हड्डी चाहिए पता था फिर अब तो नहीं रुको 100 में भी रेडी वाला नहीं है एक बर्गर और एक रेडी वाला नहीं 149 मिल जाएगा कि मैं ले लूंगी मेरा हो गया वाला पनीर वाला है 209 like burger या तो
हाँ भाई मैंने को ये करके क्या वायरल हो रहा था हमारे एरिया का अभी ये बंदा वो बाहर आते अबे हाँ ये वाला क्या भाई एक बार मैंने कहा 5 बार के बाद ये पानी को आटे मेरा वाला ठीक है बोलते हैं मैंने लात मारा तुमने लात मारा मेरे को एक लात ये बोलते हैं मैं हाथ से मारूं कैसे मार चलिए बढ़ते हैं और फोटो कितना है नेक्स्ट फोटो दोनों इसको आटे वाला चांसर वाला छोटा याद है आप मॉडल याद है क्या आइडिया है क्लास करना कर रहे हो चालू मैं लात मेरा लात लात की मारी लात मारता रुको रुको मेरा भी दूसरा ये दूसरा नाम है चिकन पकाया हाँ आपको बेटा अगर ओ मैडम कल गणपति खत्म नहीं हुई मैंने मेरे को क्यों बनाया आई तो आज घटना में नहीं मैं तो लेकिन अरे कल देखो खा लेना तो अंडा सिर्फ वेजिटेरियन होती है अंडा इसका फर्टिलिटी वाला थोड़ा लॉजिक लगा मेरे होते हुए तू एक को डाउन साइड हमने कितने लोग इससे मैंने समीना पे मेरे पास चॉकलेट है जो मेरे को समीना नहीं देगी जो खा लो क्या कर दे किटकैट दे ए किटकैट को चाहिए ब्रांडेड खाना दे नो छोटा का मेरा देखो भाई बंद कर मेरा प्लस 6 पे आई हूं बोलो अच्छा तो 150 तो 150 का नहीं ले सकते और तो भी पता नहीं इससे 150 में बर्गर फ्राइज और कोक है अरे उससे रखने बाद ऑफर चल रहा है फ्राइडे अनलिमिटेड पिज्जा पिज्जा है पिज्जा भी तो उधर ही है अनलिमिटेड पिज्जा एक और 696 और चले क्या पिज्जा के एक फैमिली के पिज्जा भी होने पे पिज्जा की हो जाएगा ओके अरे मेरी मम्मी को मैं बाहर जा दूं सोचो और मेरी इतना
खाना बता आपको खाऊंगा Sorry. क्या देखा करते हैं I'll just and one of my doctor I'll just ये सर हाँ ये सर इसमें हवा भरेंगे कुछ है है इनकी बात हवा ही है उसमें क्या काम कर रही है ओ दोनों ने मेरे को इतने मत खा जा वो क्या है मेरा हाथ बहुत बड़ा है आपके पास इसी टाइप की मैं तो खुद बोल के कुछ ही बोलता है वापस मारे मेरे को पता है आज खाने क्या पता वन फिट साइज तो व्हाट अरे फॉर ए लिपस्टिक लेट्स टॉक अबाउट समझ रहे हैं मैंने खाना है आते हुए कुछ ज्यादा ही तो अरे यार इधर के नहीं पीछे भाई पांच चीजें बालाजी वाला मेरे को तो तुमने इतना स्लोली एक्शन तो कोई नहीं आया आज यार अभी लगा रहा है तुझे अंदर ध्यान रखिए ये प्राचीन भाई क्या है वो अबे पानी तक क्यों नहीं क्या कुछ एक सौ एक दे दे अबे एक मिनट देखना है चलो कम बैक टू योर ये आगे फॉलो मी कुछ खाना चल अच्छा है मुझे हेल्प हो जाता है थोड़ा।
बस हो गया ब्रेक टाइम 15 मिनट्स ओवर हम देखो सब कच्चा मेरे को डालती है हम बाहर गए थे फिर से सही जगह डाल के चलो तो फाइनल अरेंजमेंट आई थिंक नहीं होगी ये डॉक्टर कचरे को कचरे केमिकल प्रॉपर्टी ये वाला फाउंटेन एक्सपेरिमेंट यू कैन राइट ना litmus paper test, what is that test? Red litmus, sorry, for acidic solution, red, and for basic solution, red two. Okay, आपको paper यहाँ नहीं use करके tao, you have to use the solution. Okay, in case instead of having your blue, instead of blue, if you have red color solution, okay, and gas is HCl, तो fountain का color कौन सा रहेगा? Red. Okay. Then if you are changing this gas, basic gas use कर रहे हो, with same combination, fountain का color कौन सा रहेगा? Blue. But if you are changing this gas with this paper's color solution, red ले रहे हो, तो blue litmus paper, sorry, basic, red litmus to blue. ये याद रखना, कहीं पे नोट डाउन करके रख लो changes. क्वेश्चन कैसे भी ट्विस्ट एंड टर्न करके आ सकता है तुमको. ओके, सो रिमेंबर दैट सीक्वेंस एसिड ब्लू टू रेड, बेस रेड टू ब्लू. इन केस इफ यू आर चेंजिंग एनी ऑफ द पैरामीटर, either paper or that gas, then respective change you can write in your answer. Confuse मत होना, दिमाग शांत रखो. The basic principle is acid blue to red, base red to blue. नोट डाउन से तो करके रखो कहीं पे. Then the next thing it is given chemical properties. So chemical properties, first one combustibility. जो लिटमस और रेड सॉल्यूशन तो बनता है. अरे अभी तो बताया है reagents को बहुत सारे अलग अलग टाइप के रिएजेंट मिक्स करते हैं and they make their solution. Solution on paper. पेपर में लिखते हैं तो स्कूल में हम देखते हैं क्या किया उसका. वो सोप और वो सब ऐसे से लेके तो वो तो पीएच प्रोसेस से भी सोचते नहीं वो वैसे ही देखा था एसिडिक बेस वो नैचुरल बेस इंडिकेटर बना सकते हैं कैबिन जूस हैं. Let me check my things. नहीं है. Okay, चलो. First one combustibility. For combustibility वो वाला जो छोटा सा experiment है, हाँ, does not support burning. Then thermal dissociation. Thermal dissociation. Dissociation means it is breaking. Last time भी मैंने आपको ये चीज बताई थी. Ionization, dissociation, separation. In ionization, ions are formed. Decomposition, breaking. Right now, hydrolysis system, it is breaking in presence of water. Okay, so these are the terms which can be used. Then with metal. With metal, I think many times we have done this thing. Metal with acid. याद है क्या मिलता है? Metal with acid. You have done this. मेटालिक Metal with acid. Salt and water. अच्छा. वाटर दैट कमेंट ठीक है. metallic chloride. नहीं chloride, metallic salt. Write down reaction. हाँ देखो. हाइड्रोजन प्लस सॉल्ट Hydrogen gas with salt and hydrogen gas उसके लिए भी experiment है. Popping sound. याद आया? अगर ऑक्साइड हुआ तो वाटर प्लस Water plus salt. Oxide का, hydroxide का, it is water with salt. Okay, and here water plus salt. Water with salt, and here hydrogen gas with salt. कोई जॉइन कौन है? नाउ अर्नब भार Okay, so with metal, this formation of
salt with hydrogen gas. And last one, action with ammonia. Ammonia, it will be your acid base reaction, so formation of salt. वहाँ पे एक salt था ना NH4Cl, स्टार्टिंग में ही मैंने लिखा था salt, मैंने बोला था आपको याद है ना, हम compound बोलते हैं but it is a salt. So this are the chemical properties: combustibility, thermal decomposition with metal and with ammonia. Short में सिर्फ heading लिख के रखो, only write down heading, हाँ, combustibility, then thermal decomposition. Just write down heading with metals and with ammonia. And now, यस मैम। फर्स्ट वाला क्यों नहीं ज्वाइन किया? मैम मुझे पता ही नहीं था कि लेक्चर है आज। ओके, आपको मैसेज नहीं आया? नहीं मैम। वीडियो ऑन करना ओके, ऑन कर दे। वीडियो ऑन करना You want to see his face? मैम क्या बंदा रोब्लॉक्स खेल रहा देखो क्या बोला? कुछ नहीं मुझे सुना है Next, right now. So this part we have completed till hydrochloride gas. Next part is for hydrochloric acid. So this acid, it is in which form? Liquid. Liquid form. Heading डाल दो hydrochloric acid. Read question carefully, huh? Whether it is based on gas or acid. How it is formed? Hydrochloric acid. But reacting. But hydrogen chloride gas with Funnel arrangement. water, because it is soluble in water. वहाँ पे हमने पढ़ा by proportion, one volume can dissolve how much a volume of HCl gas? 452 volumes. It is a big amount. वहाँ पे underline करके रखो. So you can convert hydrochloride gas into hydrochloric acid. Process is very simple. Just we need to dissolve it. So underline that from your volume. When hydrochloride gas is dissolved in water, hydrochloric acid is formed. इतना सिंपल वाला तो पूछने वाले हैं नहीं तुमको. हाँ, पूछते हैं ना. Next. Now, किसको जाना है पीछे? Last में. Next one, covalent bond ionizes in water due to polar nature. So covalent bond we have already discussed how it is formed. How it is formed? By sharing of electrons. Okay, between hydrogen and chlorine we have seen that bond also only one electron pair is sharing between. Okay, those electron pair, that electron pair, it is equally retained by H as well as C. Then next thing it is given ionizes in water. Underline करो वो term को ionizes. What is meaning of ionizes? Just few minutes. हाँ, ions are formed. So positively charged and negatively charged ions are formed. अभी ionization लिखा है, so you need to write down ionization reaction also. Next step, write down reaction. क्या आएगी ionization reaction? Write down reaction HCl with H2O. Charges H3O positive with Cl negative. Okay, H3O positive, O के ऊपर positive charge है and Cl negative. Next one, preparation of hydrochloric acid. Now preparation, it is not so difficult, easy ही है, but this method it is somewhat different. Heating वाला नहीं है, funnel वाला method है. So first one in laboratory how it is prepared, पहले वो करेंगे. Hydrochloric acid is prepared by dissolving hydrogen chloride gas in water. H3O को क्या बोलते हैं?
जैसे अमोनियम आयन हमने NH4 को किया था ना, वैसे हाइड्रोनियम आयन. Hydrochloric acid is prepared by dissolving, so same first sentence is given. Then अभी आगे वाला sentence देखो. The gas is passed into water until no more gas is absorbed. Okay. ध्यान से देखो, we are saying it is highly soluble. We have to pass hydrogen gas into water till no more gas is dissolved. Now, in previous class, you have learned various terms, different types of solutions also, gas in liquid, gas in gas, liquid in liquid. So this is again one type of a solution. You are dissolving gas into water, and that solution, it is saturated solution, no more gas dissolved. ऐसा वाला solution ही हमको चाहिए. ऐसे normally थोड़ा पास कर दिया, छोड़ दिया, no. इतना पास करना है so that water solution, that water, it is completely converted into saturated solution of HCl. नहीं, sub at same place different classes are going on with a different time. This is not for us. So write down that sentence. So in short, you will get saturated solution. ऐसे भी आ सकते हैं assertion reasoning में कि what is the type of the solution, or they may give you this particular statement as a assertion with some reason कि भाई this is following, not following. देखो अभी कैसे होता है, क्योंकि many times statements are also given. So write down the gas is passed into water until no more gas is absorbed, और ब्रैकेट में लिखो saturated solution. Still you have not removed ना, वो बात पीछे कर देना लेफ्ट साइड से माया ऐसे घूम, ऐसे मेरे तरफ, हाँ निकाल दिया, डाल दिया नीचे, नहीं हाँ, मुझसे झूठ बोले तो चलेगा, वो तो ऊपर बैठा है ना, ये भी तो बाद में बोलने वाले हैं. डोंट डू दैट. हो गया लिखा, till solution saturated, the bracket में then write down. देखो मैंने आपको ना बहुत बार बोला है कि 3 साल मुझे बच्चे घर में बैठे हैं के कारण देखते हैं कि what is happening in the class. Sitting on the first bench doing this thing, it is not at all good. Two options are there. Door is open, either you go out or sit on the last bench. अगर नहीं सुनना तो सीधा बैठो, sit properly. Make sure that now you will not see on this. सीधा बैठो, पूरा सीधा. The product is concentrated and contain about 36% of hydrogen chloride by mass. लिखो वहाँ पे, a percentage by mass, it is not by volume. It is not by volume for the first one. In order to show that it is soluble in water, we have taken volume part, but here it is by mass. So by mass, if you are having 36 gram, the remaining quantity, okay, to make it 100 gram is of water. We are dissolving in water, na? So remaining quantity, remaining amount, कितना percent आता है remaining? 100 minus 36. कितना होता है? 64 by mass it is water. Underline करके रखो 36. Someone from our class? नहीं ना, लिखो वहाँ पे 36%. अभी इसको जो बोला है वो तुझे अलग से बोलने की जरूरत नहीं आई थी. Then next one, procedure, how it is prepared in lab. This complete thing, it is known as funnel arrangement. लिखो वहाँ पे. Procedure is by funnel arrangement. फिगर फटाफट बना लोगे, साइड बाय साइड रिमाइंडिंग करते हैं अच्छे से. funnel arrangement. Two funnels are there. Because आपको में ऐसा किया है,
empty funnel equated funnel fully working. So it is prepared here. This pass in H2SO को ऐसे लेना. Then this is with water. So this is with empty. So only HCl is formed, which is passing. And which is the property here to complex reaction करने और बाद में finally in water. तो और यहाँ पे ऐसा वाला figure. How will that be? Next page पे. So which one we are making, this one or the one which is given in your book? See, in your book, different figure is given, which is followed by this figure. कौन सा वाला? This one? हाँ हाँ सुनो ना, दो अलग अलग है, दो अलग मतलब two steps में. This is the first one. Okay, here completely it is assembled in one set. Preparation, then drying process, then it is passed in the empty container which contain only air, and then finally by the means of funnel it is passed in the water. Okay, this complete set is assembled together, whereas in our book it is given in this. So whichever you feel it's more important, I think better you go with your textbook only. पूरा complete assembly एक साथ में है, तो पहले बना लिया. पहले बना दिया. मैंने भी ये सब पूरा इरेज कर दिए. आ रहे हो? Yes, ma'am. Textbook वाला figure you make, huh? Textbook Yes, वाला. ma'am. In which complete assembly is given together till the funnel set. Yes, ma'am. Starting वाला this one था. ये इसके आगे अच्छा. The one which you have made for the first one, the preparation hydrogen gas, the preparation of hydrogen gas, जो बोर्ड पे था starting में listen ना. First one for the preparation of hydrogen gas, yes. इसके आगे सिर्फ एक और funnel का assembly कर. बाकी remaining thing is set. पर उसके आगे continue करो अगर तुम्हें चलेगा, otherwise quickly बना लो because you have not started, no? आपने बनाया है ना? ये वाला है ना, still this part it is set. यहाँ से vacuum करके उसको फिर यहाँ पे pass किया. तो ये बना है या पहले वाला? Wait. एक textbook में in the textbook only the funnel arrangement is given. Okay, but in one textbook complete assembly is given with the funnel. So actually it is with the funnel, it is a complete assembly. You go with that one. जो पहला का बनाया है सेम वैसे ही करो, एक खाली बीकर आगे करके funnel arrangement का. मैं रफ यहाँ पे आपको बोर्ड पे बता देती हूँ. First one, here we have taken round bottom glass with the mixture. This type of figure I have given you. Then HCl which is formed, it is passed in H2SO4, right? Huh? For removing the moisture. Then this is passed in another beaker which contain only air. Huh? So air is given out, leaving behind HCl gas. This is half part meaning also, so the 75% part of that assembly. Finally, it is passed in another container beaker with the help of the funnel in water. ये इतना ही करना है. पानी अंदर जाएगा, सॉरी पानी है उसमें, HCl जाएगा और एयर बाहर. पानी उसमें है. We are making HCl, no? And the funnel it is inverted, hence it is known as funnel arrangement.
हो गया बना के done? But ये वाला तो समझा ना how it is. In the same way, once it is gas is made, immediately we can convert into hydrochloric acid. ये का स्टोर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा. हो गया बेटा? सिलेंडर गैस को सिलेंडर में जोड़ कर लिक्विड तो कैरी में आ जाए क्या उनके रहते हैं ना बड़े बड़े ड्रम्स उसमें करते हैं अपनी का मतलब ना इसको बॉटल में रखते हैं ऐसे उसको सबको कांच का बॉटल में रखते हैं थर्मस पैक और ये है ना ग्लेशियर एसिटिक एसिड हाँ दूध खोलने के साथ में ऐसे जैसे ग्लिसरीन के साथ प्याज सिंपल करता है वैसे इसके भी तो दोनों चीजों पे तो प्रिकॉशन ज्यादा लेना पड़ता है उसमें अमोनिया तो खोलने के साथ में स्मेल से जरा फटाफट हाथ चला दो and while making that figure try to digest it. हाँ digestion is very important ना. Digestion. No, अभी खाना खाए. This thing, if you are digesting properly, ना this figure and everything, because it contain hydrochloric acid. है ना? Metabolism increase हो जाएगा. Data create करोगे तो acidity हो जाएगा. तो आगे लिखो प्रोसीजर के आगे बाय यूजिंग फनल अरेंजमेंट ऐसे भी पूछ सकते हैं डिस्क्राइब फनल अरेंजमेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं पूछेंगे प्रोसीजर 4 मार्क्स का आंसर नहीं आता हम तो हम लोग को वन वर्ड और वन लाइन आंसर बड़ा अलग कंपल्सरी हम देखते हैं नहीं ऑप्शन तो खाली एक है केस स्टडी का और पैराग्राफ गिवन केस स्टडी फिर इट इज मच मोर डिफिकल्ट कि हम छोटी छोटी चीजें सीख कर देते हैं उसमें हाँ नोटिफिकेशन करने बोले तो पेज रन करो तो बट केस स्टडी में छोटी छोटी चीजें हम सीख कर तो करो अच्छे से हो जाएगा आप पढ़ाई करो रीड योर टेक्स्ट बुक प्रॉपर्ली ओके अच्छे से टेक्स्ट बुक रीडिंग अच्छे से कर पूरा ईच एंड एवरी वर्ड पढ़ के उसका मीनिंग समझ के करो चलो लेट अस स्टार्ट विद द प्रोसीजर नाउ द प्रोसीजर इज वेरी सिंपल most 75% part is there for the preparation of hydrofluoric the hydrogen fluoride gas the only thing which is not completed not covered in that part is a conversion of gas into liquid hydrochloric acid okay so once it is formed it can be easily converted quickly same time into hydrochloric acid only thing which we have to do just pass that hydrochloric acid into water in order to form the saturated solution and by mass it is 36% by mass okay now this can be done with the help of the funnel and that those funnels are inverted funnel okay inverted funnel अब होने वाला क्या है we are using inverted funnel at the last stage
Okay, with the help of that funnel, HCl gas, it will slowly pass into water. But one more thing we have done, it is highly soluble in water. तो क्या होने वाला है? This water it will be raised. हाँ, तो उसके लिए उसको बैक सेक्शन का अरेंजमेंट करके क्या करने वाले हैं हम लोग? वाटर का लेवल it will go down, which will create a gap. जैसे गैप क्रिएट हो जाएगा, in that gap there will be entry of your hydrochloric acid, hydrogen chloride gas, which will be converted into hydrochloric acid. Okay, terms याद रखो, hydrogen chloride gas, hydrochloric acid. So write down this second point, it is very much important. बाकी तो आप लोग करो क्योंकि there the actual this phenomenon what is happening it is given. First one I am not giving, हाँ, what खुद कर सकते हो, कर लोगे ना? Because it is highly soluble that we know we are converting into saturated solution right now. Since HCl gas is highly soluble in water, rises up in a funnel. This all points are very important. Write it properly. Huh? Rises up in the funnel. Put comma. Back suction occur. And it turns the level outside the funnel to you. Occurs and it turns the level outside the funnel, falls, creating an air gap. Falls, creating an air gap. Read that sentence what you have written. Since HCl is soluble in water, right? Water rises up in the funnel. कहाँ जाने वाला है water? From outside, it will enter in the funnel. Okay. Back suction occur. Back suction occur and it turns the level outside the funnel. Outside the funnel, बाहर से पानी अंदर जा रहा है. Okay. Initially, for example, this is your that beaker with this funnel. Okay. Now from outside water is entering in the funnel. This is a level. अब बाहर से जब पानी अंदर जाएगा, this level it will go down. बराबर है ना? So this level, for example, it is going down here. Initial and final level goes down. Creating creating an air gap between the rim of the funnel and surface of water. Rim of the funnel and surface of water. If you are having volume, compare these two pictures and see the difference in the area, water level. Hello? Same I have done initial and final. So there will be gap. Then right now, the pressure outside and inside then becomes equal and the water which had risen in the funnel falls down again. Falls down again. इसको अंडरलाइन करो. The pressure outside and inside becomes equal. यहाँ पे MCQ का चांस ज्यादा है.
So at equal pressure, what happens? At equal pressure, what happens? When outside water enter in the funnel, air gap is created. Okay, air gap is created at one moment pressure outside the funnel and inside the funnel. It will become equal. Okay, और equal होने के बाद में क्या होने वाला है? The water which has entered in the funnel, again it will come down, come out, and when it comes out, then this original level it is maintained. बराबर है? Original level is maintained, but now this water, is it a pure water? HCl. It is contaminated with HCl gas. बराबर है ना? It is saturated with HCl gas. आगे falls down again, put full stop. This process continues till water in the container is saturated with hydrogen chloride gas, resulting in the formation of this. No, not writing. What? मेरे पास में ना जितने भी केसेस आए थे ना फॉर पीटीएम इन ऑल सेंटर्स, सबसे बड़ा ऑल आर गुड स्टूडेंट्स, कुछ दिक्कत नहीं. मेन प्रॉब्लम इज वेयर यू नो लिखा के देने का मेरा मार्क बाय मैं सिलेबस पेंडिंग. दिस इज द ओनली रीजन. लिखाना, और जब तक लिखोगे नहीं ना वो मेमोरी में फिट नहीं हो रहा है. And this is not case with one or two students, huh? Maximum students are like this only, very lazy in writing. Chalo. So what is this actual complete process of funnel arrangement? It is simple process. Looking at the picture also you can explain it in short. Right now, बेटा क्या है procedure बता दो. क्या है ये प्रोसीजर? इन शॉर्ट टेल अस. हाँ वो मुझे दिखाओ. हम सबको पता है funnel arrangement में there is funnel, but how that process is going on? HCl is very soluble in water. Okay, HCl is soluble is what? In water. So the water rises up In the side the funnel. So when the water rises inside the funnel, what happens to this level? Levels are there now. That outside level or level of that bigger bottle, it will go down. Okay, the that pressure will be same which pressure? outside and inside. Okay, outside and inside. When these two pressures, when they become equal, so what happened? The water which had gone up, it again comes. Again come down. Okay, that water it will again come down and The process continue till the solution is saturated. Saturated with saturated. gas. It is saturated with hydrogen chloride gas, and as a result of this, what we are getting? HCl क्या? hydrochloric acid. Hydrochloric acid. बराबर है ना? So with this one, as a solubility is high, this water it is taken upside. Okay, level will go down, air gap will be created, but one moment will come when the outside and inside pressure both are equal. Okay, equal होने से क्या होने वाला है? This will come down, this water will come down, but when that water it is entering in the funnel, it is absorbing hydrogen gas also, and it is converted into hydrochloric acid. Okay, this process it will keep on continue चालू रहेगा till it absorb, till it becomes saturated with hydrogen chloride gas. Finally, you will obtain hydrochloric acid. चलो आगे जाते हैं. Now here again funnel arrangement दिया हुआ है to prevent or minimize the back suction of water. ओके, इसके बदले अगर हम डिलीवरी ट्यूब लेते थे, नॉर्मल वाला डिलीवरी ट्यूब, whether it will function like that. हाँ, यहाँ पे जो बैंक
और हाँ बैक चला जाएगा उसके अंदर, एक चीज हो गया। दूसरा चीज provide a large surface area for the absorption of HCl. So I am saying instead of this funnel, if we use a normal delivery tube like this, so there are high chances of returning back. Okay, एक चीज। Next thing, surface area is very less as compared to few chances की वापस। ये वाला एक्सपेरिमेंट एक था ना, उसमें हमने ड्रॉपर यूज किया। फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट जो था ना, इसके पहले लिटमस पेपर वाला, हमने ड्रॉपर यूज किया। ड्रॉपर क्या फंक्शन करता है, इसको प्रेस तो करना पड़ता था ना, so with the pressing what happened, the excess of air it will come out, and with that pressure, that lower litmus solution it will turn off। बराबर है, सही है ना? तो अभी यहाँ पे रिमूवल का कोई चांस है? There is any chance there will be reverse flow? इसके लिए बीच में एक और apparatus है, anti-suction device। तो यहाँ पे उसने एंटी सेक्शन डिवाइस नहीं यूज किया, उसने क्या बोला है, टू प्रिवेंट द बैक सेक्शन। मैम एम्प्टी फ्लास्क यूज कर सकते हैं एंटी सक्शन डिवाइस। हाँ क्या बोल रहे, एक सेकंड क्वेश्चन में सुनने में क्या कर सकते हैं? मैम एम्प्टी फ्लास्क को यूज करना रहता है एंटी सक्शन डिवाइस। एंटी एंटी सक्शन डिवाइस। suction device we can use. So funnel here it is working as a anti suction device. No मैम beaker is kept as anti suction device. Empty flask में एक Empty flask. हाँ बेटा, instead of this flask, if you are using empty flask, तो उसका क्या करना है? We have to prepare HCl hydrochloric liquid ना, hydrochloric acid बना रहे हैं, तो empty flask करके हम उसका क्या कर सकते हैं? मैम बैक सेक्शन प्रिवेंट होता है उससे पूरा, पानी उसी में कलेक्ट हो जाएगा फिर जो बैक सेक्शन में जा रहा है। We don't have, अगर उसके पहले तो पानी वाला फ्लास्क है ना, उससे पहले अभी बोला है empty flask यूज करना है। आरो सुन ना, Yes, ma'am. को मालूम है ये अर्नव आरो उसको पता है, मेरे पास में जो रोल नंबर 1 है ना, ही इज अर्नव सिंह, तो उसके भी नाम देयर आल्सो आई हैव कंफ्यूजन, सो आई एम कॉलिंग रोल नंबर 1। Okay, so instead of using this thing, if you are saying that we can use empty flask, so empty flask में this all thing will be passed, but what we want to prepare hydrochloric acid, तो उसके पहले रखेंगे बाद में रखेंगे, तो you have to explain in that format, but before passing into water, empty flask is placed in between in that arrangement, or whether you are passing it directly, but if you are passing it directly na, so again the same thing will happen. Ma'am, both are used, the funnel arrangement and the empty flask. So if in the funnel arrangement some water gets sucked back, we can use it as an extra Whatever precaution. explanation you are giving na, both can be used, single can be used. So in if such questions are there na, write it properly कि this type of arrangement can be done. Otherwise better ऐसे वाले प्रोसीजर से जाओ, और आपके आंसर के साथ में इनकेस इफ आई एम गोइंग आल्सो ना, तो वन थिंग इज दिस ऑल थिंग आर डन बाय द स्टडीज। अगर वैसा कुछ करना होता तो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते थे, इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इट इज सिंपल ओनली, तो वही आपको अरेंजमेंट देते थे ना कि दिस कैन बी डन। अंडरस्टूड ना? जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट मी कंप्लीट दैट एग्जांपल। In one of the book in your syllabus only, classification is given. Classification of organic compound, it is based on two things, first is structure and then is a functional group. Okay, now in that second open chain closed chain का उन्होंने सिर्फ aromatic दिया है, we check it, it is in this volume only aromatic। कुछ पूछना है? Only aromatic compound. Okay, in that chart, flow chart, and now you can check it now in this same volume you have that aromatic compound, but in the explanation part on next page it is given alicyclic and aromatic, both things are given। यही वाला है ना periodic, मैं इसका बात करती हूँ। चलो देखो मिल जाएगा आपको, अगर aromatic compound वो 55 होता है।
अरे okay ना, whatever is जरूरी not जरूरी ना, whatever explanation you are writing ना, explain it properly, mention your reason there. Okay बाबा, due to this reason it is necessary. If you are saying okay, आपने पढ़ा रहेगा कहीं पे, आपको पता रहेगा. But if the thing is happening in that thing ना, तो in any of the book it should be mentioned. हाँ okay, okay good. चलो ओके, ये पागल और शानी के लिए हम लोग क्लियर नहीं ले रहे. नेक्स्ट वन, व्हाई funnel arrangement is used. Okay, now hydrogen chloride gas is sufficiently soluble. ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे. It absorb water more quickly than it is being generated in the flask. Okay, one thing that we know. Then second one, in case the pressure in the delivery tube, the flask is reduced and atmospheric pressure from outside force and water back up to the delivery tube. This effect is called back suction. ये लिखो, ये important है. First point तो हम सबको मालूम है, it is soluble. Now next point, in case the pressure in the delivery tube, we are saying that when the pressure it becomes equal. Okay, when pressure becomes equal, what happens? The water which is there in the funnel, it will come out. बराबर है ना? This was our point in the procedure. But when the pressure, in case the pressure in the delivery tube and the flask is reduced and the atmospheric pressure from outside forces the water back up to the delivery tube. This effect is called back suction. This figure. Okay. So what happens? Water from outside, it enter in the flask. Okay, this level it will go down. One sentence we have written, when both the pressure become equals. Both the pressure means pressure of this water and pressure of this water which is present inside the funnel. Okay, जब ये equal होंगे, it will come out. But till now we are talking about this two pressure only. But this complete thing it is happening. So atmospheric pressure is also there. बाहर वाला ऊपर से, सारे यहाँ से. So this pressure it is here. बराबर है, atmospheric pressure, and due to increase in the atmospheric pressure, what can happen? This water again it will enter. Again it will enter. And now it was here. It will go in the delivery tube, and this complete process it is known as back suction. Back suction. So overall it is not so difficult, easy to remember. Only one thing, one point is increased, back suction. So you can have this one for case study. They will give you question and ask you what is meaning of back suction or define back suction or how back suction is working. So how back suction is working? Then atmospheric pressure. Now you are talking about atmospheric pressure. जो atmospheric से pressure हो रहा है उसके बारे में. When the atmospheric pressure increases and where it is increasing, where this atmospheric pressure it is exerted On the water, atmosphere से भी तो on the exert water level in the water, it will come on the water beaker. na? And what happened due to that? Again it will be raised. Okay, और वो रेस होके कहाँ जाने वाला है? It will go till the delivery tube. Okay, this tube part तक जाने वाला है. Till now we have discussed only about this particular area which is giving more surface area to the water, but now it is going in the delivery tube, and this is known as back suction.
बैक सेक्शन का डिस्कशन ऊपर नहीं, it is in नीचे वाला पार्ट में. Okay, so be careful with this point also, back section. Done. Then next, hydrochloric acid form constant boiling point mixture at 110 degree Celsius. ये वाला हेडिंग डालो पहले, सबसे पहले. नेक्स्ट कल वॉल्यूम लेके आना है. हाँ, याद सर. टेक्स्ट बुक भी रखो और ड्रिंक न्यू वॉल्यूम फर्स्ट. Done. Back suction, why funnel is used? Then what is the complete process? Next one, hydrochloric acid forms constant boiling mixture at 110 degree Celsius. इसको underline करो. Underline this. Distillation process last time we have discussed. Huh? It is combination of two different processes. What is that? Evaporation and condensation. एक्सेल गैस और एक्सेल एसिड होगा, उस दोनों का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट Differently होगा ना, क्योंकि one is gas, another is this one liquid form. Okay, and for gas that chart is given. छोटा सा test is given for physical property. Right now we are dealing with the liquid, which is dissolved hydrogen fluoride gas. Solute solvent में I think you might have done. If your solute is of high boiling point, then the boiling point of the complete mixture increases. If it is of low boiling point, then boiling point decreases. This thing you have already done. Now here it is said hydrochloric acid form constant boiling mixture at 110 degrees Celsius. Acid solution, right? Acid, it is in solution form. This solution is obtained by dissolving gas in water. Gas in water. बराबर है, बाद में बचे कल क्वेश्चन में. Gas in water. Now for water we know boiling point is 100, but that mixture acid boiling point is 110 degrees Celsius. अब ये हमें क्या बता रहे? Dilute aqueous solution of hydrochloric acid gradually concentrated on distillation. It is concentrated on distillation. Concentration term we have discussed. In metallurgy process, we are removing impurities only that which our is remaining. Okay, so you will get that amount of hydrochloric acid, but how it is done? It is done by distillation process. Distillation ka arrangement we have already discussed. Till the concentration of acid reaches to this particular composition, it is again important. So write down that concentration. It is 22.2% of HCl. Concentration wala all calculation you have done in previous class, and I think in this class also. 22.2% HCl by weight. लिखो बेटा. Already you have written, underline करो उसको अच्छे से. 22.2% till now we have done by volume, by mass. This is by percentage by weight. 22.2% HCl by weight and 77.8%
water by weight, which boils at 110 degrees Celsius. The composition which we have is of 22.2% of HCl and 22.2% of HCl and 70, how much it is? 77.8% of water. And this particular solution, it boils at 110 degrees Celsius. So when it start boiling, okay, this solution, when it start boiling, we can do the distillation process, evaporation, condensation, सारे processes हमारे हो जाएंगे. देखो वहां पे एक ज्यादा कंफ्यूज मत थी. See, distillation till the concentration of acid reaches to 22.2 and next sentence देखो यहाँ पे when this concentration is reached, no further increase in the concentration of acid is possible by boiling. This is a fixed amount of concentration. अगर आप boil भी कर रहे हो, if you are doing distillation also, then whether there will be change in the concentration? No. This is a fixed proportion. Proportion is 22.2, 77.8 percentage by weight of HCl and water. Okay. Normally, a specific term is given azeotropic mixture. So in azeotropic mixture, whatever solution you have, it will boil without change in its composition. It will boil without change in its composition. If normal, for example, if you are heating normal water, temperature to padega normal water, right? It is not a mixture, normal water. So when you boil it, what will happen? What will happen? It will evaporate. बराबर है ना? उसका composition में कुछ change हो रहा है? H2O का H loss हो रहा है, HO loss हो रहा है? No, but that is a pure water. Only water. What we have here? We have a solution. We have a mixture. This mixture is of hydrogen gas with HCl. Hydrogen gas with water and hydrogen gas by weight, percentage by weight, it is 22.2 and water is 77.8. वो percentage को अच्छे से underline करो because many percentage, volume and weight बहुत सारा आ गया है वहाँ पे. उसका एक चार्ट बना के रखो चाहिए तो आपके पास है. Next point. कुछ पूछा बेटा? You ask something? The constant boiling mixture is solution which boils without any change in its composition. It will keep on boiling. Okay? वो ऐसे ही boil होगा लेकिन उसका ऐसे नहीं होने वाला है कि उसमें से water निकल के चला जाएगा. No, this is not going to happen. It will keep on boiling without changing the temperature. So write down that second sentence. Constant boiling mixture is a solution which boils without any change in its composition. Underline करो, उसको star लगा दो, and remember all these important sentences. Assertion reasoning में आ सकता है, or you may have in MCQ also. But I think for this one MCQ, they can ask you this percentage, mass, volume, numbers है ना? So to make you एक तो पूछेंगे ना? मैम बॉइलिंग पॉइंट पूछेंगे. Boiling point of this mixture. क्या पूछ सकते हो तो यहाँ पर I think यहाँ पे ना in this volume board questions are there. हाँ, previous year board questions are there. So from that you will come to know how questions are asked. See, one first question है hydrogen chloride gas is prepared in the laboratory by action of concentrated sulfuric acid on sodium chloride. Okay, give balanced chemical reaction for the above reaction.
तो सिंपल ना NaCl with concentrated sulfuric acid. First step product is NaHSO4 plus ये है ना सुबह में HCl gas. Then state the method of the collection of the gas followed by method of collection of upward displacement of air and downward. Okay. पर डिलीवरी में मेंशन नहीं किया आपके बुक में अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर. अभी उसमें किया तो मुझे पता नहीं. आगे what is the property of sulfuric acid that makes it a suitable reagent for the reaction? ये क्वेश्चन अगर आए तो आप जरूर मुझे याद करोगे. पहले इसका आंसर बोलो. What makes it suitable reagent? H2SO4. Why it is used? Non-volatile. Huh? Non-volatile. Okay, non-volatile. और क्या है? Suitable reagent for the reaction. वो भी उसको यूज करते हैं. Drying agent. ड्राइंग के उसमें पास करते हैं इन ऑर्डर टू रिमूव द मॉइस्चर. बाद में इसको यूज करते हैं. और नाइट्रिक एसिड का उन्होंने क्या दिया था? नाइट्रिक एसिड का दिस इज volatile. नाइट्रिक एसिड इट इज volatile, so along with HCl it will also go up. So this is the reason why H2SO4 is used. So ऐसे तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आपके पूछे. ऑल आर इजी क्वेश्चन. ये वाला देखो. In the laboratory preparation, HCl gas is dried by passing through. By passing through किसे पास करते हैं? Concentrated sulfuric acid. Concentrated sulfuric acid. Options are nitric, sulfuric, concentrated nitric acid, and acidic water. Give reason. Hydrochloride gas cannot be dried over quicklime. Because quicklime is basic and will react with HCl. Yes. Neutralization reaction. हाँ, याद करोगे ना मुझे? तुम लोग को थोड़ा घुमाया था. चलो नेक्स्ट देखते हैं. Physical property of hydrochloric acid. Now hydrochloric acid you are using in lab. What are the physical properties? थोड़ा तो कुछ पता रहेगा ना. It is in a liquid form. Then it is soluble in water. Then color हल्का पीला रहता है. बराबर. मैंने भी इसको हल्का पीला ही अभी तक देखा है. और मैं बच्चों को जब उस पे लेबल नहीं होता ना तो आई एम से येलो कलर सॉल्यूशन. Okay, but here it is given it is colorless. So maybe the original it is colorless, but as it is highly soluble कुछ बाहर का आके जमा होके हो जाता रहेगा. और they are using droppers. ड्रॉपर कंटामिनेटेड रहेगा तो मे बी पॉसिबल है. देन स्मेल अगेन इट इज पंजेंट एंड चॉकिंग स्मेल. देन टेस्ट एसिडिक का टेस्ट कौन सा होता है? सारिन टेस्ट, बट नेवर ट्राई इट. फिजियोलॉजिकल एक्शन, सो इट इज हार्मफुल फॉर आवर स्किन एज वेल एज फॉर इंटरनल ऑर्गन, तो उसको स्मेल नहीं करना है. सॉल्युबिलिटी वी नो इट इज सॉल्युबल इन वाटर. बराबर है ना? Then next one, chemical properties. Now chemical properties are very important. Here you have to write down many chemical reactions. So let us start with the first one. Nature. Aqueous solution, it is highly acidic and shows all properties of acid. All properties of acid. Now first, action of metal. So metal का तो हमने already we have discussed with the gas ना. What is that reaction? And salt बनता है. Okay, same thing is given here. Quickly write down reaction. लिखो यहाँ पे. शॉर्टकट में ही लिखना. हाइड्रोक्लोरिक एसिड react with metal above hydrogen. This is important. Above hydrogen, below hydrogen होने का reaction क्यों? Because they are not active. Reactivity is less. Order is highly reactive, moderate, and less reactive, or not reactive भी दे सकते हो. सोना दिया क्या है कौन? Above hydrogen. Below above hydrogen in the reactivity से. लेकिन तो जाके कुछ एक्सपेरिमेंट मत करना वहाँ पे. We don't know what is the concentration. Concentration फिक्स वाला तो देखो मैं तुम्हें इसकी तो सुनी थी.
That's why I have written values also. नीचे मम्मी मारता है मारेगी ना. Forming metallic chloride. देखो. Above hydrogen, it will form metallic chloride with and complete करो and किया है complete. उसको अंडरलाइन करो. शो अपवर्ड एरो. राइट ऑन मेटालिक क्लोराइड. विच मेटल कैल्शियम के साथ में आपने रिएक्शन किया है वो. Then next one, action of oxide and hydroxide. Even this thing we have discussed. With oxide and hydroxide, two products are formed. First product is salt. Other product is water. With oxide as well as with hydroxide. चलो करो फटाफट reaction लिखो उसका. It reacts with oxide and hydroxide to form salt and water only. Apart from this, nothing else is formed. You are not writing reaction. और एक दो reaction ऐसे fix करके रख दो कि this reaction you are going to write in paper. Okay? Done. The reaction अच्छे से लिखो. First is with MgO. Hydroxide का reaction नहीं दिया है. Write down reaction of NaOH with HCl. For hydroxide, NaOH and HCl. It is not given in volume. HCl, hydroxide reaction. Hey, it is many hydroxide reactions are given in your book. Page number 148. Sodium hydroxide, calcium, zinc, copper. Okay, so whichever you feel it is easy to remember, you can take any one. Balance. मारो तुझे पकड़ के. हाँ. What is this? NaOH with 2HCl. क्यों लेना है? ये कौन सा क्लास सॉल्ट बनाया? NaOH only with HCl, not required to HCl are not required. चलो नहीं कोई जरूरत. You write to five. हो गया क्या लिखा प्रोडक्ट? NaCl plus H2O. Your brother is writing NaCl2 plus H2. अरे देखो कैसे आप लोग सिंगल मिस्टेक करते हो. It's not okay when it comes to marks. हाँ. समझा ना? अभी देखो remember one thing. Whichever whatever reactions you have now, always the product it is an important product और वो exist करता है. आप इतना visualization reaction में नहीं कर सकते. Suppose, assume, ऐसा नाना वैसा नाना. You are not studying order of the reaction, molecularity of the reaction. उसमें visualization है. But this is a fact. Okay, एक thing. Second thing, you are making two or more product, but one product it is a major product of the reaction NaCl, and whatever byproducts you are getting now, they are always simple byproduct. Either you will get H2O, you will get CO2, you will get methanol, or in some reaction you will get COs. But they are simple byproduct. So with respect to byproduct, you can write down the main product. और आपको main product आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, because main product it is a क्या बोले goal of your reaction. Otherwise byproduct को ये देखता है. पता नहीं वो बच्ची वहाँ पे खोपचे में बैठ के क्या करती है. चलो, so with metal oxide and hydroxide, with both you have completed. Again I am repeating, in your book many reactions are given. You can take any one which you can easily remember during your exam time. Then next one, with salts of weaker acids. With salts of weaker acid. So it decomposes salts of weaker acid. What is meaning of decomposes? Decompose. Breaking. ब्रेकिंग से भी याद रखो, ब्रेकिंग हो जाएगा उसका. डिसोसिएशन तो नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें आयंस फॉर्म होते हैं. ब्रेकिंग. It decomposes salts of weaker acids. You are not writing. Example: carbonates, bicarbonates, sulfates and sulfides.
सल्फेट्स एंड सल्फाइड्स दोनों चीजें यहाँ HITES and HIDES sulfates and sulfides एक just write down 1 to 2 reaction कितने हैं 3 we have 3 here और आपके बुक में कितने हैं बहुत सारे हैं you are having reaction with मेन चीज बदल सकती है और sulfate और sulfide में what is exactly happening that we should know जैसे कि यहाँ पे देखो कैसा फॉर्मूला है जो तुम्हें कोई आंसर आ बैलेंसिंग में any differences there both are 1:2 ये हाइड्रोजन सल्फेट वो तो इसमें भी है ना 1:2 here also 1:2 product is again 3 products are formed here and here in this case 2 products are formed okay, please write down the difference before difference sulfates put oblique hydrogen sulfates hydrogen sulfates plus hydrochloric acid giving metal chloride product is metal chloride plus water plus sulfur dioxide ओके ये मेन है जस्ट लीव 3 लाइंस एग्जांपल में देखिए लीव 3 लाइंस हाँ आफ्टर 3 लाइंस राइट डाउन मेटालिक सल्फाइड हाइड्रोक्लोर हो गया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिविंग मेटल क्लोराइड plus hydrogen sulfide. Okay. Now for this one, take one example. Metallic sulfide का Na2S plus 2HC. Write down this reaction. Complete करो. Na2S plus 2HCl and for first one NaHSO3 plus HCl and Na2SO3 plus 2HCl. This is for sulfide. This reaction is for sulfide. जहाँ पे sulfide का लिखा है ना main उसके नीचे ये reaction complete करो. Under sulfate write down these 2 reaction and tell me where you find the difference. अच्छे से लिखो product done all 3 completed. हाँ 3 ना first अच्छा complete करो all 3. 1, 2 and 3. This is for sulfide. This is for metallic sulfide and this is for sulfate. हो गया आपने all 3 you have completed. All 3 done. Difference बताना है. Difference. एक में SO2S निकलता है Which one? सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस है हाँ. हाइड्रोजन क्लोराइड Wait. With the first and second one, if you are going by number from here, हाँ कल बजाएंगे और बचा कुछ अभी आपके रिजल्ट के बाद बजाएंगे. HITE के अंदर ये 2 reaction you have to write down. Completed. This 2. This you are writing under HIDE sulfide. Done. So you are talking about this 2 or this one. that and that That mean that and different
तो पहले वाला बता दो सीक्वेंस में जो हाँ दिस एंड दैट मत करो नंबर यहाँ से जो सल्फाइड है नंबर बताओ नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है ना फर्स्ट में रिजल्ट मतलब प्रोडक्ट सेम आएगा कैसे दिस टू यूर राइटिंग जो 3 लाइन गिव की है ना ऊपर उसमें ये 2 रिएक्शन हो गया ना HIT दोनों का सेम रिएक्टेंट प्रोडक्ट आएगा अच्छा यहाँ पे दिस इज फॉर द सेकेंड वन मेटालिक सल्फाइड उसमें डिफरेंट अभी मुझे फर्स्ट और सेकेंड का प्रोडक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड बुक में देख के बुक में जो लिखा है ऊपर sit there you check with that product for Na2SO3 with 2 HCl product is NaCl H2O SO2 okay then with NaHSO3 NaCl H2O so first and second you are getting NaCl H2O and SO2 as per the content which you have written at the top metallic chloride water and sulfur dioxide okay wait then for sulfide it is NaCl plus H2S okay हमको कंपेयर क्या करना है स्टैचोमेट्री देखो रिएक्शन का you are having reaction in this ratio 1:2 see here 1:2 again this reaction is 1:2 है ना 1 ये है 2 HCl है similarly here 1 this and 2 HCl sulfate and sulfide but where is the difference at both the places you are getting HCl NaCl दोनों यहाँ पर है ना NaCl सल्फेट में भी है सल्फाइड में भी है but in first one it is H2O and sulfur dioxide byproducts are H2O and sulfur dioxide whereas in second one in sulfide you are having H2S तो अगर आप सल्फाइड के साथ में रिएक्शन कर रहे हो तो गैस इज H2S and if you are doing reaction with the sulfate balance it properly but the product with the chloride you will get is water and SO यही बताना था इससे इतने सारे रिएक्शंस लिखना हाँ तो वो रहता ना वो रेशियो वाला इशू नहीं सल्फाइड वाला हाँ फिलहाल रेशियो वाला इशू we are not considering we are balancing that reaction main difference we are finding so if you are not going with the ratio what are the products of the reaction with sulfide you are getting HIT के साथ में क्या मिल रहा है metal chloride water and sulfur dioxide gas and with sulfide you are getting metal chloride and hydrogen sulfide so in short metal chloride we are getting with both the reaction whether it is sulfate or sulfur उसके अलावा क्या मिला है तो उसके अलावा ये मिला है so here again one twist is there with metal sulfur what you are using metal sulfate or metal sulfur समझ में आया बैलेंसिंग यू विल डू जैसे मैंने पहले ही बोला है मेटल सल्फेट विल फॉर्म प्रोडक्ट्स क्या मेटल क्लोराइड मेन प्रोडक्ट along with that water and sulfur dioxide and with metal sulfide salt and metal chloride and H2S सल्फाइड बोल ये वाला HID किया है मैंने यहाँ पे मेटल क्लोराइड एंड H2S समझ में आया सल्फर डाइऑक्साइड ही हम लोग बोलते हैं ना सॉरी हाइड्रोजन डाइऑक्साइड गैस से हाइड्रोजन सल्फर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड तो यहाँ पे हमको क्या मिलने वाला है H2S गैस with sulfate 3 products metal chloride H2O and SO2 याद रहेगा ना डिफरेंस श्योर
एग्जाम्पल आप अपने मन से हल्के फुल्के छोटे छोटे, ज्यादा बड़े बड़े मत करो, मेक स्मॉल स्मॉल एग्जाम्पल विच यू कैन इजली रिमेम्बर। मुझे बताओ इसमें से कौन सा ज्यादा इजी रिमेम्बर रहेगा एग्जाम्पल। तो इट्स सल्फाइड, HIT, NaCl वाला नहीं सब, it is not easy to remember so many reactions. अगर एक टाइम तो सब लोग सब याद हो जाएगा क्योंकि सबका सेम ही है। हाँ तो ऐसा आपको सल्फाइड में फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला वाला ही प्रॉब्लम है, अदरवाइज रिमेनिंग पार्ट इज अ सेम। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो दिस थिंग वी हैव डन, देन नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आ जाओ अभी, एक्शन ऑफ थायोसल्फेट, एक्शन ऑफ थायोसल्फेट, व्हाट हैपेंड, स्टिल टाइम इज देयर, जब बच जाएगा ना वेल आई विल, no 145, write down action of thiosulfate 45, 145. चलो नेक्स्ट राइट डाउन, dilute hydrochloric acid, dilute hydrochloric acid react with thiosulfate, dilute hydrochloric acid react with thiosulfate to produce sulfur dioxide. It is sodium thiosulfate. To produce sulfur dioxide gas, इसका फॉर्मूला आपको पता है, and yellow sulfur is precipitated. It will be in the PPT form. Filter it, dry it, and then you can, अगर वे करना है तो वे करो, किसी और प्रोसेस के लिए यूज करना है तो वो यूज करो। राइट डाउन रिएक्शन, it is sodium thiosulfate Na2H2O3, write down reaction Na2H2O3 plus 2HCl। अभी जो दिया है ना उसके हिसाब से write down the products as well as byproducts। ट्राई करो, प्लीज डोंट कॉपी। two byproducts are given, sulfur dioxide and sulfur। बचा क्या है वो देखो and try to make the simple product। हो गया, सीधा बैठो। ये पूरा सबको जो भी देखेगा ना रिकॉर्डेड लेक्चर सबको दिख जाएगा कि कैसे बैठा था। वेरी बैड कवर कर रहे हैं। Done. Products two are given, मेटल क्लोराइड, metal chloride, water and sulfur dioxide and sulfur। Downward, upward arrow. Which one? Sulfur downward, sulfur dioxide upward। Next one, action of metallic nitrites, action of metallic nitrites, NITRITES। This uses you will read and do by your own, yeah? uses cancelled। Okay, test for hydrogen gas. Wait, आप जो test for hydrogen gas and test for chlorine gas, chloride ion को तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है। Okay, action of metallic, बेटा पूरा कर। Action of metallic nitrites, write down on heating metallic nitrites, dilute hydrochloric acid gives metallic chloride and oxide of nitrogen, metallic chloride and oxide of nitrogen। हो गया? हाँ, क्या गैस प्रोडक्ट क्या फॉर्म होते हैं?
dilute nitric acid forms metallic chloride. Again, metallic chloride is formed and oxide of nitrogen. Write down this reaction. अभी आपके book में different reaction is given. So you check with which reaction you are doing. 2KNO2 plus 2HCl. बहुत सारा है बोलिए. 2HCl giving 2 KCl plus 2 HNO2. 2 HNO2. Nitrous, this is nitrous acid. Huh? HNO2, it is nitrous acid. And what is formula of nitric acid? HNO3. Next step, write down 2 HNO2. 2 HNO2 giving H2O plus NO plus NO2. हो गया. अभी मुझे आपको एक बात यहाँ बतानी है. तो चलिए आगे चलो. Here nitrous acid is prepared. Nitrous acid is prepared from HCl and metallic nitrites. बराबर है. Metallic nitrites K is used. Instead of K, you can also proceed with Na. So that reaction will be, लिखो Na के साथ में reaction. हाँ, NaNO2 will complete it. Because this reaction we are doing for different experiments in organic chemistry. NaNO2 with HCl, product is NaCl, बराबर है ना? Plus HNO2. 2 मिलता है यहाँ पे, 2 लेना है. मेटालिक के साथ में 2 है, सो बैलेंस करना है. 2 2 2 and here 2. फिर बैलेंस तो 1 में ही था. 1 में भी बैलेंस था. वो आपके बुक में पोटेशियम के साथ में 2 लेके उसको बैलेंस किया है. बट नॉर्मली द वन विच वी आर डूइंग, वी आर राइटिंग विदाउट बैलेंसिंग. जो हम लोग करते हैं प्रैक्टिस में, इट इज विदाउट बैलेंसिंग. ओनली द प्रोपोर्शन इज 1:1. 1:1 and we are preparing nitrous acid because this is not available like our nitric acid. So this is one of the methods for preparation of nitrous acid. Okay, अभी आपके बुक में है या नहीं वो आप चेक करो. But here one point is given, metallic nitrite. So you can use either potassium or you can use sodium. In one also it is balanced, not necessary that proportion is 1:1. Then that nitrous acid, further it is decomposed, it is break down into H2O, NO and NO2. आपके बुक में many reactions are given. Whichever you feel it is easy to remember during exam time, you can go with that. But remember, you are preparing nitrous acid there. क्वेश्चन उल्टा करके भी पूछ सकते हैं. हाउ नाइट्रस एसिड इज प्रिपेयर्ड, पूछ सकते हैं ना. व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ नाइट्रस एसिड? नाम दिया है वहां पे नाइट्रस एसिड, नेम इज गिवन. नो, so that is nitrous acid. Write it down, nitrous acid. And which reagent you are with which metallic compound you are getting nitrous acid? It is metallic nitrites, RITE. वो जरा अंडरलाइन करते जाओ, हाँ, because you will get RITE, R, हाँ, बहुत सारे nitrates, nitrites. Then reaction with nitrates, RATES. This reaction also we are doing in lab for detection of halogen again. हाँ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके लिए हम लोग करते हैं. राइट डाउन डाइल. आपके उसमें भी रहेगा ना प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, रहेगा ना ये वाला रिएक्शन. राइट डाउन
with dilute HCl does not normally react with nitrates. However, a reaction with silver nitrate solution, it gives thick, curdy, white precipitation of silver chloride. Silver chloride. Then write the white precipitate is insoluble in nitric acid, but soluble in, this is about white precipitation, not about salt. डिफरेंस है वहां पे, सॉल्ट आपको मैंने मॉर्निंग में बताया है. नो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ सॉल्ट. Soluble. No. अमोनियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट. Hydroxide को. हाइड्रोक्साइड कैसे सॉल्ट होगा? कुछ भी मैंने नहीं बोला, कुछ ऐसे मैंने बोला दिस वन dropper is deep in the solution of ammonium hydroxide and came near the mouth of that test tube. White PPT is insoluble in nitric acid but soluble in ammonium hydroxide solution and forms a complex salt called diimine imine silver in bracket Roman number का 1 chloride is formed. Salt is formed. अभी तुमको thymine अमाइन इसमें डिफरेंस है, सिर्फ अमोनिया तक तुमको है, तो खाली एक याद रखना, सॉल्ट इज फॉर्म विद दिस चार्जेस, ओके, एंड इट इज डाइसिल्वर इमाइन सॉल्ट. So di means what? Di means 2, tri means 3. Okay, now write down reaction. First reaction is of silver nitrate with HCl. फटाफट लिखो चलो. AgNO3 with HCl. So here you will get white PPT of silver chloride. And this PPT, they are present in nitric acid, but they are insoluble in nitric acid. It is given in the next sentence. वहाँ पे underline करो, insoluble in nitric acid. So we can separate it. We can separate it by filtration. Yes. अब उसको फिल्टर करके हमने सेपरेट कर दिया. हाँ, then after separating we can make solution by using sodium hydroxide. Okay, sodium hydroxide, but this solution, it is a complex of diamine silver. Show me. Diamine silver first chloride is formed. रिएक्शन लिख लिया ना, मैं इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो क्या है, वो मेरे लिए है. And I'm going to ask for you to reaction to complete. Usually you can complete at home by looking in your text. But you have completed all reactions. I don't know what you are going to do at home. इतना सारा यही तो बोला ना, आप लोग लिखने में बहुत लेजी है, इतना सारा लिख के रखा है. ये लिखना था, समझ के लिखना था, वो तो आपने लिखा है. Okay, now from this, which part we have to do? Uses you will do. Just check it whether it is there or deleted. Yeah. Then test for chloride we have already done. Starting में हमने किया है.
test for hydrogen, chloride gas and hydrochloric acid. It is simple. So this can be completed within 5 minutes and दो topic cover करने थे. Tomorrow we will start with ammonia. Try to come on time. Ask about time also. Again you have a lesson. Tomorrow. Eleven to 12:40 and 12:45 to 2:30. करना. Girls, tomorrow 11 o'clock. हाँ? जल्दी निकलो and thank you. उससे पहले बायो का है लेक्चर है. अच्छा तो चलना. Bye Arnav. Bye Arnav. Bye. 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 तो छाता है. चल रहा है. हमें ना हम लोग है ना. और Bye bye Arnav. छत पे बोल रही है. तूने पूछा ही क्यों? मैं पूछ नहीं रही. मैं भी नहीं पूछ रही है. वो बस बोल रही है कितना बेचती है. मैं बाद में जाके बोलूंगी मैंने खाना में रखी हुई है. कभी है. रखिए. और ये मैं उसकी क्लास में घुस गई. मेरे को मतलब स्टूडेंट्स अरे सर बहुत सही सर जो उधर बैठे मैंने देखा ही नहीं. वो बैठे आप लोग से स्टूडेंट्स. बढ़िया है. बोले ओए क्लास खत्म हो गया. अरे नहीं चल रहा है क्या बातें करने का टीचर वो बोले चल रही. और अब मेरी मम्मी को बताइए 30 क्यों खत्म होने वाला है. हाँ मेरी मम्मी को भी पता है. तो फिर मैं तो मिक्स है. मेरी मम्मी ने व्हाट्सएप ग्रुप देखा तो मुझे लग रहा है कि मेरा 250 खत्म होगा. तो अच्छा चलिए अच्छा तब बोले बॉटल